Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, a very special welcome out here from Tujan Sports Field. Finals of Tujan Premier League between Tilsara Gymkhana and Mezan Karpora. Toss won by captain of Tilsara Gymkhana, and they are batting first. And it's gonna be 20-over game, no deduction. Tujan and Isaac out there in the middle, the two opening batters. And swinging away, tries to go for a slash, outside edge, and a good catch by the wicketkeeper. It's Tujan who goes without opening his account out on the second ball. It's a silver duck for Tilsara Gymkhana, and they are struggling a big way. Why would you slash outside that up stump? And in the meantime, a big fish caught. And guess what? It's the wicket of Tujan. Oh, what is it? Look. A new batsman who walks down to the middle. What's now? Shabir. Shabir. A lot will depend on the man. Shabir Yusuf, huh? Okay. And ultimately, Tilsara Gymkhana struggling with Tujan back to the pavilion. Not much. And out on the second ball, Silver Duck stood away. And Mezan Karpora, they are delighted. Wicket on the second ball, that too dangerous. The backbone of Tilsara Gymkhana walking back to the pavilion and giving a lot of disappointments to the whole team. Good bowling. Truly talking about Adil Manzoor, naturally looks like to bowl and pitch it up slightly with the new ball. He can swing it away. Was that a bit of mistake by Tujan to try and just send his bat to that ball out from the up stump? That's gone the pass now, and you will have a lot of disappointments individually and for the entire team as well. Beaten outside up stump again. Adil Manzoor is just keeping it straight, just making sure outside that fourth stump channel. Thank you, Padibal. Big fan of Baba Saab. We want your commentary at Royal Premier League Pulwama. There are the JK Sports Time commentators doing quite best. Thank you once again, a big fan Sajid Altaf from Mashwara Shopian. Again, no movement at all off his speed. Loud appeal, everyone just going and big loud for that appeal, but umpire looks unmoved. That is smart kind of bowling. Truly Adil Manzoor asking questions straight away. And unfortunately, there hasn't been a run on the board. And still a ball to go. The next ball wrapped and no damage done. That will mark the end of the over. A fruitful one for Mezan Karpora. What a start. No runs, but a big wicket of Tujan. Truly, as a team, giving a lot of fights, reaching to the finals of Tujan Premier League. Already losing the semi-final of SS to Super League yesterday. Over. Amizab umpires nazar tha mekun bas. They lost that semi-final against the likes of FCC Lasipora. And today playing in the finals of this Tujan Premier League.
And losing a wicket, that too in the very first over, second ball. This is something you would never love to start. And Zakir will have the ball in his hands. Two slips in place. A short third man. Deep point covers. Mid-off up. And long on goes back with mid-wicket and squarely inside the circle. A lot will depend on Ishaq. Alongside still one more. Shabir is out in the dugout, who had a good time yesterday. Slightly soft and delicate. Needs to be quick. And they are through for the first run on the board. Just opens the count. Tilsara Gymkhana. Thank you, Tanveer. Keep sharing and keep subscribing this YouTube channel. And even though both the teams, one village tournaments just being played out here at regular level, but just getting to the final, it's been always something that you have been phenomenal with your control. And Shabir looks not confident out there at all. He's lacking that footwork. He's lacking that extension of arms. And I believe the best thing for this man, if you lack that footwork, why would not you push yourself on the back foot completely? Wrapped on the pan, and up goes the finger! The ball was keeping low, and even Shabir looks not happy at all with the decision, but the finger has gone up. It's number 2, and Zakir strikes as well, and Shabir also goes without opening his account, and Tilsara Gymkhana losing the shape. They're 1 for 2 now. Not the start you would have wanted, but Mezan Karpora, they're all absolute mesmerizing with those 2 wickets. The new ball is doing damage, and both the opening bowlers are striking a wicket each. The batter just looked not happy with the decision. Slightly, maybe could have been going and missing the leg stump. That's what we could predict from here. But not sure whether it just hit the bat as well. The decision has gone. The finger has gone up. And he will have to go back to the pavilion as well. That's a disaster for Tilsara Gymkhana. A new man who walks down to the middle with all responsibilities on his shoulders. Here's Ramiz. What a stop for Mezan Karpora. And ultimately, it's a big 20-over game, and you are 2 down just in the over 2. That is Mezan Karpora, truly on the top. This is something brilliant from the bowling side. Adil and Zakir just sharing a wicket each. And in the meantime, I believe tough moments for Tilsara Gymkhana to look forward for a bit of construction phase. As a team, when you lose 2 batters pretty early, that too, Tujan, who is walking already back to the pavilion with nothing under his belt, lot will rely heavy on this player. That's Ramiz and Ishaq. And the new ball is truly doing some damage. And Zakir will be just having absolute mind, and he will be trying to impact and create a bit more effect with his ball. We are live here from Tujan Sports Ground for the finals of Tujan Premier League. Oh, good ball, keeping it straight but giving it a defensive push. And down to the mid-on. Off the mark goes Ramiz straight away.
And I believe the way Tilsara Gymkhana played yesterday, the semi-final, that was of SST Sheikh Shifi Traders Super League. Even they just happened to lose that semi-final at the hands of FCC Lasipora, but they gave a good fight, till end we could see that match moving. Oh, this is what he can do. Slightly a bit short on the back foot, transposes all his weight and shifts it over his square leg for the first six from Isaac. Unbelievable shot selection from the man. And even this will bring him a bit of confidence as well. VMB, Veer, thank you very much. Says good is everything is good on the ground. When he has some grudges, some concerns about the umpiring. That was wide of the off stump. Loud appeal. And a dot ball will mark the end of the over. 2 overs gone, some runs, a wicket as well. Tilsara Gymkhana winning toss, batting first. They're 8 for 2. Adil will continue. And I was desperately searching your good self on Facebook. Came to know that you were covering the grand final on YouTube. I'm quite obsessed to your fluency. Vocabulary, ecstatic voice. Jalal. Well, we have been just covering these matches. Around a month has passed since we are switching back to this YouTube platform on account of having some consistent issues, violations on the Facebook, contents getting deleted, suspension of our profiles and pages. So we decided to go for something better, and that is why we are switching to the YouTube, and it's just coming brilliant, and I hope you are also enjoying it. This has been truly a big disaster for Tilsara Gymkhana. 8 for 2 in just 2.1, and it's a constructing phase. But even when you talk about Ramiz and Isaac, they both are very capable batters, carry a lot of experience, carry a lot of legacy behind. And undoubtedly, this is where the test actually lies for these two big batters of the side. And when you take your side truly home for some incredible contribution, I believe that's where you stand your test. Slightly, you will have to look forward for that contribution. Even if you are out there busy for enjoying some balls, it might come pretty dots to you. That's all affordable. That's all digestible. That's all understood, because losing 2 wickets in just first 2 overs, it's understood there might be just not that good push in the run rate. Slightly outside off stump. That was a bit full. Not able to pick that gap. Might not be happy. But Isaac is among those batters who loves to settle, who loves to just give himself a bit of time. And then he can take the long road, as we saw him doing in that last over for hitting the first 6 of the finals. He needs to be a bit more careful as well. Slightly the plan for these two will have to try and just be extra careful. Caught effort to lose 1 more wicket from here. A wicket more goes, and the problem continuing for your side. So you got to be quite serious for your approach. And look at that fieldsman. It looks like a test cricket fielding is going on. 3 slips waiting for that outside edge. Cuts and cuts well. A lovely square cut, a bit late. Width off already, cashes it to the count. A lovely shot to finish. We are done with 3. A boundary to go. It's 13 for 2. The runs will come. All just you need to do is to be a bit more patient. This is also a big test of your temperament.
And eventually, Tilsara Gymkhana in the past have been under these circumstances quite regular. They are a very tough side and they know how to just overcome these kind of circumstances. Needs to hurry. They are through. Good running between the wickets. Slightly we could see these two looking for a construction phase. And in the meantime, if you are new to this YouTube channel, time for you to shower your love and subscribe this YouTube channel of Baba Nisari Sensation. Mezan Karpora. Nice introduction in his finals. Picking 2 wickets pretty early. Just playing a smart and mind game. That's good cricket overall between these two. Leaving to try and just keep rotating. Mohammad Ashraf also sending his luck. Best of luck for Tilsara Gymkhana. Devotional Life says nice game. And a bit of slow with the run rate. It can be just quite handy. Quite accelerating. Oh, loud appeal for cut behind. Of course, the finger. Ultimately, a surprising ball nips him back sharply. That too with a big bounce as well. And the big man goes. It's Ramesh with the box caught behind by the wicket keeper. Number 3 goes, and Zakir has his second. You will have to swallow the story. Never expected this thing from Tilsara Gymkhana. This is just what you will have to go and what you will have to witness. Asif? Asif Kurshin aaj na? Asif. The new man walks down to the middle. And a moment of joy. A moment of making merry and cherry. That's Mezan Karpora. Brilliant efforts, brilliant bowling, brilliant keeping, brilliant catching. This is where you can continue that pressure and you can keep it mounting on the likes of Tilsara Gymkhana. Finals of Tujan Premier League. Tilsara Gymkhana winning toss, not proving a good toss to just bat first. Serious situation for the side. And even Ishaq is still there. We have seen only one boundary in the form of a 6 hit by Ishaq. Rest. It's been all brilliant bowling from the likes of Mezan, that's Zakir and Adil Manzoor. And even one more batter now just walks down to the middle, gonna give company to the likes of Ishaq. He is Asif Khurshid. Truly that last ball, that was just a surprising shot of length, kicks off the surface in no time. And one thing you could see, the captain still dominates with those 3 slips in place. And as a bowler, you need to just keep on pushing your line straight away from the up stump. That's what these two are going. It's been a tough story to now for all the batters. And a lot are getting exposed pretty early. Oh, right to the pad. Just drifting down the leg. Through for a leg by. Zakir is bowling something brilliant. And as a teammate, when you believe that your all members are struggling,
As a senior player of your side, what becomes the duty on your shoulders is to try and go for a bit risk. It's a bit of experiment, because if you go for some 2-3 aerial shots with that wide gap on that extra cover, you truly can have a bit of chance. But it doesn't look easy. You got to be an extra talented batter. And Ishaq, we all know, is such a flamboyant batsman from Tilsara Gymkhana. Got to spend time on the green. And if he does, if he goes persistent, he can surely come up. Lovely shot. That's just what I was telling you. Wide gap on that extra cover. Slightly over pitch, and he smashes it away for 4. Will mark the end of the over as well. A boundary to finish. 4 overs gone. Going at 5 runs per over. It's 20 for 3. Ugly. Adil will continue. Captain still believes it's the best time to have your prime fast bowlers go in bowl 3rd over on the trot. Good ball. And even Asif can take his time, he doesn't need to hurry. Even now you know the damage has been done, and you can save this damage. You truly need to block and just leave some balls at early of your approach. Inside edge, the ball is running down. I believe a tough chase for that fine leg fielder, and now it doesn't. In the meantime, the ball rushes away for 4. Not a comprehensive, a risky shot, but still it will give him a bit of contribution. Off the mark goes Asif with that boundary. Naturally, Asif is someone who loves to dominate. And at the moment, the situation just looks like a bit tough for the batters. It's all about your adjustment skills. Good running. And if you manage around 4-5 runs in this power play of 6 overs, you can go to 30-35. But make sure you do not lose any more wickets. You can create a bit of atmosphere, because still there is a depth in the batting unit of Tilsara Gymkhana. Still Shabir Yusuf to come. And the way he batted yesterday looked like an absolute fighter for his side, but he couldn't get that support from other side. So there is not, big concerns. Only thing to understand is how long and how big these two go for this 4th wicket partnership. Ishaq and Asif. Good ball. Equally played well. And Ishaq has got that patience level. He is known for his temperament scale as well. He won't give you wicket. And he is just a big fighter. Wide of the off stump. And umpire Latif signals it's a big wide. Even extra column can help you a bit. And if you stay on the crease, the plan has to be try and just play the full quota of 20 overs. That can be the better thing for you to try and produce some big runs on the board. Oh, it's a miscue. That is in the gaps. The wicketkeeper is giving a chase. The only thing to see whether the ball is going to cross the fence, and I guess umpire signals yes it does. Boundary to Ishaq, and he just goes on to 19 now.
That will mark the end of over as well. Over! It's 33 wickets down. They're going 6 runs per over. We're done with 5. कुछ जाकरी चूफ पूर आठ हर्च बरतना है जिसके लिए हम उसको जाएंगे कुछ आप बोलो थर्ड साहब इजी Just the last over of the power play to be started. They'll bowl the 3-1 for 15. And it is a bowling change. It is Sharif Zubair. Comes out as a fourth change in the first power play. And Ishaq still gives his fight alongside Asif, his partner. They will have to go for a big partnership here. And on the other side, how dominant Mezan Karpora will be to try and just keep their pressure building. And the momentum just goes in their favour with 3 wickets under 5 overs. Not too many runs on the board. And it is to be seen and just discovered. Should be a wide. Not normally you see too many left-arm pacers. Here we see Sharif Zubair, a left-arm pacer. Still, I believe there is a lot of time left in this innings. And as a batter, you truly can just try and produce the best batting skills out of you, what you have. Normally, when you look at this venue, it's not up to the bigger dimension. So as a batsman, you stay on the crease. You can create a very quick acceleration. And if you look at yesterday's match between FCC Lasipura and Tilsara Gymkhana, it was only one batter from FCC Lasipura, Meera, who scored an unbeaten 100. Rest, he was just losing his partners from the other side. Maybe these two batters, they would have the impressions of that match as well. So they would believe they are capable. They are going to go big and long. Oh, shot of length. Watch the smash. And he finds no contact. And Zubair, he is trying to just hit the decoy tart and produce a bit of bounce after that surface, making it quite tough for the batsman. Swings, even finding not too much bat on that. But ample time for the two batters to come back for 2 more runs. But Ishaq looks not interested. Only a single could stop that mid-wicket region. 2 balls to go of the power play. 32 for 3. And on the offside, we could see a mid-off standing pretty wide. On the extra cover fielder, I guess, here's the covers. There is point, there is deep point. There are 2 slips in place. And you switch on to the onside, you will see a backward square leg shot, a mid-wicket shot, and mid-on also being brought inside. And that point fielder, that's being pushed back. Shot, that's been hit. Even finds no big blade on that. And he is quite disappointed that he couldn't find the maximum out of the same. 2 more runs to Ishaq. He's such a big back foot player. And he makes it feel very easy for transferring all his weight onto the back foot. Naturally, he's a back foot player. And a lot will depend on the approach of this man. And his team will just need, and what this man carries on,
Oh, that's in the gaps. That's superb. That's an absolute and gorgeous shot. Glorious late square cut and into the fence it goes for 4 runs. A boundary to finish the power play. 6 overs gone. They make sure they are running over 6 runs per over with the help of 4 extras. It's 38 for 3 now. Power play. It's a bit of comeback story. And even under this scorching sun, you could see some players going for some flexes. And truly, we could see it's a consolidation phase. क्या करना है ऐसे क्या उठो These two, they know and understand the duty and responsibility. Arthra, 38. There has been a bit of break. And even though it's not the best time to take a break, you could have just managed to go for 10 overs, then you could have slightly gone for the same, not sure about. And I do find a bit of opportunity to mention the proud sponsors, SST, Yakoja Garib Nawaz, Fruit Company, Prichu, proprietor Mr. Mohammad Shafi Sheikh, Lazzat Spices from Sopor, Mr. Ayaz Bhai, Halayat Agri-Fresh Cold Chain, Minimart Motors, Divine Cyber Cafe Mungama, and M2A Pizza and Cafe Turkawangam Shopian. If you are looking to add really some spice and a lot of love and real flavor to all your dishes, remind only one name in the spices, that's Lazzat Spices for you. And you have got the number, the details, contact details of Lazzat Spices of Fayaz Bhai, that's given on that logo. Just below that SST, Yakoja Garib Nawaz, Fruit Company, Prichu Pulwama by Mr. Mohammad Shafi Sheikh. And now you could see the players walking back to their respective spots. Even though a bit of comeback story. And all eyes on Ishaq and his partner Asif giving him absolute company from other side. And they will definitely love that this combination goes long. क्या बोला And we do find another change. It's Zohaib Nazir. 4 for 44, the best of his bowling figure. There he goes. First ball. Long run up. Shot misses. Well directed bouncer. That's exactly where he tries to surprise the batsman. And even though no spinner introduced, even we are done with the power play, there is dispersion of the field, scattering of the fieldsmen as well. Not just loving to take a bit of risk at this moment. Keep on believing and having that faith in your past prime fast bowlers.
shot. And a bit of fumble into the square leg. First fumble from Mezan Karpora. 4 runs. And you could listen to that hustle from all the crowd out there at the back of that fielder. You could expect that such a lenient approach from that fielder in the deep square leg. 4 runs. On to the double figures goes Asif Khurshid. Slightly a building phase looks like, and all you just need to do, go and keep on constructing and keep on going and find a bit of complexion. Looking busy. Through the wickets, between the wickets, good with the rotation. Things are looking just a bit sensible and easy for Tilsara Gymkhana with this wicket partnership. And oh, gone between the two. His heart could have been in his mouth for some moments. Outside off stump pull, going for a drive, and in the meantime take outside edge, but between the two, slip in a keeper. It's a lucky boundary for Ishaq and for Tilsara Gymkhana. 4 runs. It reminds me of that semi-final match between New Zealand and Pakistan when Shoaib Akhtar was bowling to Ross Taylor, and a catch between Kamran Akmal and Yunus Khan went through. No one went for the try, and almost Ishaq went down the same. Shot, hooks down, and down to that long leg it will go. It's a back-to-back boundary, and it's a 50 upon the board for Tilsara Gymkhana. The runs have started to come very thick and fast for the side, even not full of comprehension, but you will embrace them. Oh, flex! Oh, uses his wrist. Oh, 6! That's a wrong line to bowl, and you are making a suicide if you bowl this wrong line to this man on the pads. He's such a strong fellow, and you could see how beautifully he uses his wrist. Second 6 to the man. Over. 57. 7 overs gone. 19 from this over. Big one. And ultimately, Tilsara Gymkhana looking very strong now. Finally, we could see the pressure is releasing, and the man who is responsible, the courtesy is Ishaq. On to 39 of 18. Look at that strike rate. It's more than 200 even when you are 3 down already in that power play. That's a Superman strategy and Superman performance, and making sure now you are going over 8 runs per over. The problem what we have discovered with the likes of Asif to all short of length balls is not good at his toes. Even he is not quick, he is not quick hands as well, because slightly outside the off stump short of length, or even if it is going through your head, if you are quick with your hands, you still can find a contact. Ejaz Ganai, thank you very much. Thank you, Talash, for giving us your love. And a fumble on the backward point, and Asif gets a single. Good cricket overall, because his duty, his job at this moment should be to try and bring his man Ishaq on the strike pretty often. He is looking in some absolute dominating mood.
And he just wants to destroy the bowling line at this moment. Goes exactly. This is where I was telling you. Have this man on the strike, wide of the up stump, and he will go. And he is going to hit one more six outside the up stump and over wide his third man for six. 64 for 3. From a situation of 2 for 2, Tilsara Gymkhana smartly moving to 64 for 3 now. With Butt sending his love. All the way from Jammu, this is Apish. It's a square leg. It's a square leg and he catches it. Oh my goodness. Sharif Zubair strikes. Big pitch goes. Normally the dominant side of Ishaq, where he loves to create a lot of absolute runs. Not finding the hold of that ball, and eventually you could see from his reaction he is completely disappointed, and it's a big misery to the likes of Tilsara Gymkhana. They are 64 for 4 now. The partnership gets broken. Lot of eyes truly on this man, but ultimately it's a commentator's curse. When it needed that he will just go and keep going, he needs to convert this start into something big, but it wasn't the same story. 64 for 4. We are in over number 8. A partnership goes. What a knock. 45 scored, but ultimately not being able to deliver too long. And Mezan Karpora once again keeping that momentum going, attacking with all the implementation of options they have got and utilization of all these options. That's the best captaincy from Mezan Karpora. Super batsman? Batsman Kusut? Batsman? Shibir Yusuf, huh? And the man of the semi-final for Tilsara Gymkhana goes to the centre now. The crowd is loving it. So are the fans of Mezan Karpora. Tilsara Gymkhana started to look very brilliant, comeback. And ultimately Sharif Zubair has got some different plans. First wicket to the man, 1 for 15 off his 1.4. Nicely played. There is a third man in the deep. And an easy single to this man. Shabir gets off the mark. Team will just believe that he goes the same what he just did yesterday. But every day a new day at office. Every day not going to be the Sunday for you as a team. Soft hands. That could be the best strategy. Just believing in singles. Over! 8 overs gone. 9 from it and a big wicket of Ishaq. It's 66 for 4. Sohaib will continue. His bowling figures so far just bowled 1 over. It was expensive, 19 runs in that, courtesy by Ishaq, who just took him on. Even there are still 12 overs left in this first innings. Good cricket. Asif looks a bit busy. He's going run a ball innings. That's exactly what his team needs at the moment. And eventually, from over number 8 to over number 12 in these 4 overs, if you manage to keep rotating between the wickets and you just go with around 5-6 runs per over and keep wickets safe,
That's a bit of strategy where you can truly get more stronger. Another single. 68 for 4. And even you are almost going over 8 runs per over. That's where it will take you to 160. And Actis Venue being a local side, and you truly have got that best of the bowling attack, and it's quite good enough for you to defend that around 170, 180. He was hit on his chest, and he signals that he's all okay. And with the kids enjoying some time off from the schools, they're out here in huge numbers. That's where you are just listening to the lot of honks and ponks. 68 for 4, we're in number 9. And I believe this is going to be some partnership for Tilsara Gymkhana. If it counts, if it clicks, and truly it will be over 170 with such ease. Some issues with the helmet, with the grill, I believe, signaling towards the dugout to find a new helmet, because the last ball he was hit close to that upper chest. Maybe some grill of his helmet could have been engaged. And those who might have tuned in later, telling you we're live from Tujan Sports Ground. Final of Tujan Premier League between Tilsara Gymkhana and Mezan Karpora. Gymkhana Tilsara winning toss, batting first, starting and struggling in the power play. They were 3 down, but now slightly a bit of comeback story for them. It's 68 for 4. With Ishaq, the top scorer so far, out for 45. And here we all get ready. Still having those 4 fielders on the circle on offside with that deep point makes them 5. That's where you are looking attacking. Misses. The problem with this man, Asif, I was telling you, anything wide of that off stump, just a bit short, is struggling a lot. Absolutely, Hanif. Tilsara is struggling big way in this finals. It's a big time for this partnership. It truly comes big for the side. They will love to at least get 150 plus, give something to the bowlers. But I'm pretty sure if you just spend time on the crease and you play full spell of 20, you are going to go and cross 160 with ease. Lovely, lovely bowling. In that last over, this man, Zuhaib Nazir, he was hit for 19 courtesy Saku, attacked him on all corners of the ground with those brilliant shots. But now, with the back of Ishaq, Zuhaib Nazir is bowling brilliant. Down the track, uses his feet, not finding hold. Will find a single down to the square leg. Will mark the end of over as well. And just 3 runs from it. 9 overs gone. Slightly going over 7. It's 69 for 4. इनसे ऊन में बार-बार
Javed Shaban, eh? Okay. Another change in bowling. Thank you, Jalaluddin. Absolutely. And he says about Shabir Haji, what we remember him when we were little champs age. Just a number for this man. His golden arm has produced a bundle of wickets for Tilsara during his during his heydays, during his prime days, during his energy days. And now doing something with the blade as well. He did prove yesterday, and time for him to prove again. Will be the last over of the first half. A spinner introduced finally. And even Asif, who's going 15 of 19, should be a wide. Extra number 6 to the column. And even you look 9 overs, you are making sure you go around 8 runs per over. Oh, this is a leading edge, but I guess it's quite lucky for the man. Could stop using his football skills, needs to hurry, and they do 2 more runs. The double taking them down to 72. Only thing what you need to understand as a batter is to make running between the wicket possible as much as you can. And truly the young kids, they are looking energetic today. Throughout this full game, I believe we're going to enjoy the same energy. Shot down the wicket, not getting hold, fielder coming underneath. Oh, drops. A big try, but eventually not getting hold of the same, and a bit of fortune of luck for the man. 2 more runs. $74 for 4. Even I believe if you look at the runs on the column, around 80, still 3 balls to go. It's 74 for 4. This is something what we could see. It's been totally could come back things. Oh, wide to the up stump. Umpire will raise his finger. It's a nothing shot till the end. He was walking down the track. He was trying to play a last just defensive. Not the great shot offered. Ultimately, it's a stumping. 1 more goes. Asif Khurshid departs for 19 of 23. He's stumped. A brilliant stumping by Irfan Hamid. And with that, half the team walks back to the pavilion. Emis क्या असली नाम Emis किसी और बात अच्छा Butt Sajid okay. And he was looking a bit struggling, but one thing was pretty sure, he was looking contributing as well, even though just a bit slow rate. But he is also back to the pavilion. 74 for 5. Half the team back to the pavilion. And Mezan Karpora, they are delighted. They are rejoicing. They are overjoyous. This is just what we could see. A bizarre situation for the likes of Tilsara Gymkhana. It's disheartened for the fans. Still, there are 10.2 overs left with 5 wickets in hand. And you have Shabir Yusuf alongside Butt Sajid, who walks down to the middle to join him. You never know, they can create absolute drama and absolute magic from their bat.
Roof, Isaac, Ramiz, Asif, all back to the pavilion. And this has been just a delightful story for the likes of Karpora. Not the best time you throw your wicket away. You have to be on the toes. And you have to stay on the crease. There's a lot of time left in this first innings. And it's not the best thing you throw your wicket away. You got to be a big fighter for the side. Finally a wicket to Javed Shaban, introduced as a spinner, and gives some lot of merries to his team captain. Outside off stump, cuts well, good stop. Absolute efforts, saving runs for the side, even knowing we are 5 wickets on the top. But this is exactly what you can truly prove. You are full of dedication always, Mezan Karpora. Thank you, Tavid Bhatt, for this wonderful statement of love. Hope video quality and audio quality comes quite good to you. You're enjoying it on the YouTube channel. Even you can enjoy it on your smart televisions. On the top he bounces. A single to finish. Over! 10 overs gone. 7 runs and a wicket. They're going at 7.6. Yes, but system ko sasa wide. Hey, Tilasha, Akbal. 1. कुछ लिखा वहीं कर भी एड हॉक मिस लास्ट वाल गई आख वन तारा तब जरन मुजरा था वो इस मुजरा जरन तो इस जरन मुजरा yes Arsadat ना सत्सद da Zayıf ne? Well, I can't say anything about that. Leg umpire could be the best judge, as we are standing way away from that cricket ground on the top of that cliff. And so Nazir will continue. Still remember the first over that resulted 19. In the second he just resulted 3. He has got 2 more left, but he is looking to try and find a wicket at least to his wickets column. And playing and offering shots, not easy at this moment. And eyes on this man. But Sajid and Shabir Yusuf, even they do carry a lot of practice, a lot of experience. Thank you, Tavid Bhatt, for treating me as a good commentator. And drops! Goodness me! A flying jump and a flying dive from the wicketkeeper. Previously having 2 catches. It could have been a superb and a flying catch. And it's gone down. He was following that ball, Sajid. He was trying to guide it and slap it a bit. And just a thick outside kiss. And simply wicketkeeper diving but not getting complete control. Thank you very much at this moment, watching from Gurdaspur, Punjab. Oh, could be, and is short of length, surprising the man ultimately.
He was continuously trying to just surprise every batsman with that short up length balls, and all of a sudden a drop catch on the previous ball, but this time short mid wicket, making no mistake, and Zohaib Nazir finally has a wicket in his column. Sajid goes out for 1 of 4. It's 77 for 6 now. In the end, a nothing short at all. And SP Video says, we watched on 25 inches on live stream. He kept his foot before stumping. Well, that could be the story, but we are just bound to just make the decision as the leg umpire raised that finger. I'm not sure about right here from the spot where we are giving it a live streaming. It's completely tough for us. Thank you, Tawid, but keep loving and keep enjoying, keep subscribing and keep sharing this live streaming on my YouTube channel of Baba Nisara Sensation. This was no batsman. And Danish, the new man who walks down to the middle, on the strike he will be. And the first wicket to Zohaib Nazir. This has been an absolute misery. This has been absolutely where we can say it's been ending in a fiasco. It's Tilsara Gymkhana struggling a big way, not having a perfect start in the power play, not being able to construct and consolidate. Even there was some consolidation for that wicket 4, but as soon as we saw the back of Isaac, since then, no one just goes and gives something absolute control in that contribution. 77 for 6. Is it going to come out as a one-side affair, one-side romantic story, one-side absolute traffic? It looks like Mezan Karpora are truly determined that they do not let this side to go and bat through for the complete 20 overs. Almost played on. Straight to that mid-wicket, but off the mark he goes. Danish gets a single. Shabir Yusuf, even he is not getting too much of strike. He has been off the strike for too long. So you need to have this man on the strike. And that's where he can truly generate the real production of the runs. Well, what a bowling performance from Mezan Karpora. 78 for 6. We're in the number 11th. Last ball to go. There he goes. Rights on to the top. Pushes. It's no run on that last ball as well. Over. 11 gone. It's 78 for 6. Javed Shaban. Javed Shaban will continue. Successful in his post over, picked up a wicket as well. And it will be Danish on the strike. Nothing to cheer about for the fans. They were losing wickets and losing them at regular intervals. This has been just the bowling dominant final. Normally in a shorter format of T20, where we always calculate it's going to be the batter's dominant game. But out here in the finals, where you do not expect this kind of approach from Tilsara Gymkhana, they are struggling absolutely. Except Isaac, no one has been able to stand there. And even now the plan should be as simple as it can be for you. And the important thing just going through your mind is to make sure you play full 20 overs.
because you play full 20 overs. You will go around 140 plus. It might be some total, and you're not not sure about if any of a batter just from your side clicks and he just goes for a bit acceleration. He can be an absolute big finisher for your side in the first innings. That's what these two batters will have to believe. And on the other side, Mezan Karpora, wherein we have seen some best bowling. We have seen some good catching, some ground fielding has been quite to the best. They will just try to keep that attacking consistency. Approach looks attacking. It looks like they are not just leaving their easy nature and atmosphere for these batters to score free. Should be a wide ball. Plus they are running through for one more, means 2 more runs. 82 for 6. Believing in just running through the wickets. That's where it looks like sensible. That's where it looks like seriousness. That's where it looks like craftsman and rotational cricket. The policy needs to be kicking. The policy just needs to be moving on. And a bit quick ball, not taken cleanly by the keeper as well. And off the over, 12 gone. It's 83 for the loss of 6 with the help of 7 extras. Zuhaib. And captain just pushes his man to ball on the trot and get his spell done. Zuhaib Nazir, 1 for 23 off his 3. What a smart comeback it has been for this young lad. 19 runs off his first over. And it was courtesy from Isaac, who hit him plenty. But in the next 2 overs, just 4 runs and a wicket. That's where it has been a masterclass bowling. 8 more overs left in this first innings. You got 4 wickets in hand, and you all just need that consolidation. Slightly, that consolidation can be brick by brick, can be run by run. Even if you go with this kind of approach, it will take you to 140. And having wickets in hand in the last 2-3 overs, you can truly just put your foot on the accelerator. And on the rise, he wants to play without having movement off his feet. It's a dot. That's been the best thing what we have seen from this man Zuhaib Nazir. Truly, if you look at his release point, you will see a lot of international bowlers where he just resembles the action. And again, just a bit slower, looking committed for the stroke pretty early, beats him outside off stump, 2 dots on a trot. And ultimately this man looks like not in that control of stroking. And he needs to be just a bit pushing himself onto the back foot, just try and play with the full face of the blade. And this was slightly on the up, tries to hit it, fielder comes underneath, drops, easy catch, elevation was there, but ultimately not finding the balance in position, and the catch has been put down. Slightly we could see a fraction of luck falling in favouring this side, Tilsara Gymkhana now.
But you are not being able to just take it and just make the full advantage of the same. But one thing is for sure, this man is bowling jam. On the back foot he goes, on the toes, cuts it beautifully and makes sure he hits it over that deep backward point 6. That will give him a lot of confidence to Shabir. The man who batted like a genius yesterday just starts his count again. And on to the double figures he moves. This is turning out to be finally some good over with that 6. One ball to go. That was short. Could have been loved to just go for a hook shot, but the fielder just looks like not to throw it. It's a single. Will mark the end of our over. 9 from 8, 13 gone, 7 extras, 6 wickets gone. It's 92 for 6. उसका फोन कुछ शरीफ जुबैर है. Captain goes back to his fast bowler, prime fast bowler, Sharif Zubair. He has a spell of 2 overs, 1 for 17. And with just last 7 overs left in his first innings, still looking for that 100 runs on the board. But one thing making sure these two just look like a bit busy in that construction phase. In the gaps, nobody moves. That's gone. 4 runs. Welcome to the crease, Sharif Zubair. Typical Viren Sehwag shot by this man, Shabir Yusuf. He would not move his feet along. And Shabir Yusuf also just going the same. 96. Good ball. क्या दिल नसा क्या दिल कहते गड़बड़ कैच और गया वाइड गड़बड़ से खॉड में Just hitting the glove. başı lefa. Kile. Kaç kez? मतलब आखरन च काम कोई बात नहीं बखड़ 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 बीस स्ट्राइक पर दानिश की शबीर महगाम महगाम वनकस शबीर स्ट्राइक पर आप गई कह यह रन खड़ा यस बाज कह परवाह मगर स्ट्राइक पर शबीर ना अवे गड़बड़ गो कह परवाह यह रन आज रन खड़े में वनकस मैं रोदन फोकस तक कोई बात नहीं. Some correction in the number of runs. There was 1 run short. That's been rectified now. It's 98 exactly. There was a correction with the name of batter actually on the crease. .98. We are just in the number 14. You're making sure you go over 7 runs per over. Oh, keep slow on that moment. Nothing a batter could do on that. 1-1-1. 98 for 6. 1 ball to go. Slightly, it has been 1 more good over. Even a boundary was hit on the first ball. Since then, we could see just 2 singles only. Rub to the pad. Loud appeal, but umpire shakes his head and says no.
And we'll mark the end of the over. We're done with 14. It's 98. We're 6 wickets down. Tilsara Gymkhana. Tar maklani mesti keren ye. Zagirava. Six overs left. And if you go around 10 runs per over, this will take you to 160. Not easy story. And even though we have just started to see a bit of partnership between Shabir and Danish. Shabir batting on 20 of 14. And he needs to click on. Сейчас strike पर Shabir होंगे यार मिसो strike पर Shabir हाँ दिमाग खास में हूँ मिस चलो सुना कर क्या Danish on strike, and Zakir gets ready. He has got 2 overs left, 2 for 13. Yeah, let's find out, is he going to come magical in his spell of 2 more? Oh, wrapped to the pan, and he comes magical with his first ball. Up goes the finger, and Danish trapped in front of the stumps. The ball keeping low, and he was just a bit late in bringing his bat down. One more bites the dust. It's 98 for 7 now. And ultimately the problem continues, the misery continues. And what an absolute execution of planning from the side of Karpora. Not letting any new batter settle at all. Kuswat? Shahid Hurrah, the new man. On strike he will be.
And there are some lovely spectators on your screen. करा चुप Welcome, Musab. Once again, the struggling situations continue. We haven't seen any big partnership except that wicket for that spin where it has been a big failure for this side. Underhand run, you are still 2 runs short and you are 98 and you are 7 down. This has been some big results for the bowling side, Mezan Karpora. This has gone over the head of the keeper into the third man region. 4 runs. Umpire signals these will be 4 byes. And with that boundary, it's handed up on the board. It's 1 or 2 for 7. Just wait a bit as the over gets done. I will truly just try to catch you once again. Shaidhura. Oh, just look at that. Surprises the man. Another dot. Absolutely, Gul Mohammed, I believe, not coming out of that trauma. It's been a big trauma to the side, losing semi-final and just not going and scoring some contribution today in this finals. 102 for 102 for 7. One ball to go. There is Shahid going to create some stroke. And he goes! Exactly! Swings it over mid-wicket. Ho-ho! 6! Absolutely blasted us away. A lovely shot to finish the number 15. It's 108 for 7 now. And you could see the crowd.
चल कसं का हो ना इस पर कुछ बॉलर कर मोहल्ला मिस कर फोन First ball of it. New bowler. It's been just hit down to the backward deep point. 4 runs. This is Zubair Zakir शायद है शायद लेफ्टी बॉलर कुछ बॉलर चेंज है गोय मिस हमसे वन में अरे यार क्या कर रहे थे काउंट करनी ना ना कुसा बोलो ना आज ला वन हमसे आवर गयो That last ball is actually not counted because previously there was an over completely done. And it will be Zubair who gets ready to start the last over of his spell. 1 for 23 of his 3. And still 5 overs left. 30 legal balls for you. Shabir 20 of 15, Shaidura 6 of 4. And Shabir will be on strike. And his entire team would love that this man goes for something really fabulous in these last 5 overs. And this passion, you can go to 150 around. It won't be enough with the way we have seen the scores being hit on this very venue. For Mukhtar, it's not wrong score actually. That last ball is not going to be counted because that was actually already. Straight down the ground. Lovely shot. 4 runs. That's a good welcome to the crease. नहीं ओ सावर गोमत एम बोझी न सुगत मानोस अकद बा हाँ न तलाई रिकाउन आखमेट अंपेर
Cuts it. Lovely shot. Goes. It's a back-to-back boundaries to Shabir Yusuf. And his score is taking a bit of jump as well. And you could see the individual score of Shabir Yusuf. He goes on to 28. 120 for the loss of 7. And to have 2 boundaries on the first 2 balls, it looks like that the plan is completely visible. That's going to be full of aggressions. Cuts it again. Oh, it's a no ball. A big no ball. And it will be a license. And Shahid will definitely love to take the full use of this no ball. First time we have seen an overstepping. And as a batsman, if you truly just want to click for your bat, you can't get better opportunity than that. And not finding hold of the same. Oh, it is a run out! Oh, goodness me, it's a big run out. It's Shabir Yusuf who will have to go. On the free hit, the run out does get declared. It does get considered. My word, can you believe? Ultimately, Shabir Yusuf will have to go. It's run out. This is truly something you would have never wanted, and your best man, who could have been a man of crisis for Tilsara Gymkhana, is walking back to the pavilion. He was looking somehow in some control. He hit 2 boundaries already in this over. But I guess it was his call. He was pushing Shaidura to take that single. And normally on that free hit you don't see too many run-outs, but out here in the finals of Tujan Premier League, it's gone possible. Only 2 batters left now, Amir and Sadiq Dar. And the question is, are Tilsara Gymkhana going to play the full quota of 20 overs? That is a big question mark. And Mudassir Ahmed Bhatti says he's traveling in train and is watching this wonderful final through traveling. In the train he is at the moment, inside the train, watching this very beautiful finals. This is something that's all possible through the global media. Thank you very much, Mudassir. Situation looks tense. It looks desperate. What, Amir? Only the first run out we could see in this final so far. That too of the best attacker. 122 for it now. Sharif Zubair, even his bowling is last. This one is upish. A fielder comes underneath. Oh, drops! Not only dropping the catch, but the ball pops out of his hands. It goes over his head and goes for 4 runs. Oh, it's a bit disaster. It's been unlucky for that man in the deep square leg. Not only dropping, but making that ball go over his head and goes for 4. No matter how the runs come, Tilsara Gymkhana will take that. And Shahid Hurra will have to try and just go for some double performance, because he has been involved in a run out of Shabir. And he goes on to 14 of 6 now. Can you go past 150? There are still 4 more overs left after this gets done. We are in the 16th. Zubair goes again. Short, pulls. There is a man coming underneath. Short of the man. And he just takes a fumble, a bounce, and goes over his head and goes for 4 runs again. This is absolutely the mighty best from Shahid Hurra.
And he would be exactly understanding this, that he has been involved in a run out of that big fish. And he will have to go and score double for the side, and he is truly starting to deliver. 130 for 8, last ball of the cards. Sharif already has been among the wickets, just a wicket to his name. And what an over, 4 boundaries, no ball a bye as well, makes it around 18 of the over. Akbar. And gestures and close to the man, direct hit. Oh no! From that slips, he was trying to have a target. And eventually only he will have a single. Marks the end of over. We are done with 16. 19 from that over. It's 131 per 8. Still 4 overs left. The only thing what these two batters will have to bleed, just play these 4 overs. Kusuchi bowler? Zakir. It's gonna be left arm pacer Zakir. He's also just left with 1 more over. The pick of the bowlers from Mezan Karpora, 3 for 23 of his 3. Truly, it has been the hallmark of his career, Shabir Yusuf. Truly disciplined and a big man of sportsmanship. Always just a character down to the earth. But unfortunate scenes for this man that he just got run out. Adilava? Last ball पर किए गए हो? Last ball पर किए गए हो? Single हाँ. आदिलावा. कोई बात नहीं. बकर. It's Adil who has been introduced. It's called as a wide. 1 more extra to the column. 132 for 8. Currently they are going at over 8 runs per over. Flashes. There is a backward point. And we'll find a single. 133 for 8. 17th over in business. Shahidurra and Batamir will have to believe that just try and play all these remaining balls, and even if you play all these remaining balls, you still can go past 150, and that's where your bowlers will have something to really try on in the second innings. 134 for 8. At one stage they were just to right 6 runs per over. But now towards the last moments, as we're seeing the fall of wickets, but we're seeing the runs also coming in thick and fast rate for the side. And you can grow that number of viewers watching this finals live, more than 53. Keep sharing and keep subscribing this YouTube channel. That's Baba Nisari Sensation. Slower ball, still finds a connection. Oh, some football skills. Good football skills on that moment, not letting their ball go beyond that boundary. Another single, dealing in singles at this moment. It's been always an over of singles, plus we have seen a wide, making 5 from the first 4 balls. Good ball, just close. And he was trying to swing it on to the onside, finds no control. 136 per 8. 2 wickets in hand, and Mezan Karpora just trying the level best to define and wrap the innings up on the 20 overs of this very Tilsara Gymkhana. And Hurrah cuts well, smashes it through the right of the point for 4. A brilliant boundary to finish. 9 from the over, end of 17. It's 140 for 8 now.
Slowly and steadily, Tilsara Gymkhana getting close to that 150 mark. Even having still 18 legal balls left for your side. And even if you go run a ball, it will take you to 160, but you go more than that, because on the other side, that wicket's 8 number down. That's where it's a bit of struggling situation for you. Javed Shaban, who gets ready to start his third, 1 for 13 with an economy of 6.5. Oh, he goes, drops! Not only drops, but the ball has gone through the fence. 4 runs. Ho, ho, ho. Ultimately, the runs have started to come thick and fast. Truly, it's a matter of fortune for the likes of these two, Amir and Shahidurra. No matter how it comes, Tilsara Gymkhana will absolutely embrace those runs. Bonus. Towards the last moments when you need to wrap the innings up, the catches are being put down. $144 for 8. And entirely, if you try and talk about today, it's been off from the institutions, and that's why you see a lot of kids enjoying these beautiful finals. There is absolutely great splendor. It's truly full of glory, truly full of pop and energy. And with a lot of fans you can have for Tilsara Gymkhana. Just not up to their expectations, but still they can finish well. 3 dots on the trot after scoring that boundary on the first ball. Smart bowling by Javed Shaban. Smartly coming back, keeping it just around that 4th stump channel. He knows that he just pushes himself onto the back, but loves to try and just go square up that wicket. Plays it sensible. Plays it for a single. 145. Just 5 runs from this over. Smart comeback. And Shahidurra will allow to try and just go for something big on the last ball. Oh, he pulls! But there is a man in the crate deep. Only a single will be resulted. That will mark the end of the over as well. 18 overs gone with the help of 13 extras. It's 146 per 8. तो ठीक घर से ठीक से कराओ मैंने मुश्किल से घर से ठीक ही It's gonna be Zakir, who also gets ready to bowl his last, even though he has been the pick of the bowlers for this side. Brilliant economy, you will see 23 runs just conceded, but look at the wickets column, pull off 3. And Shahidurra, I believe the best moment for this man to try and counter big. Edge and drops again. Oh, it's been a story of drop catches today. What's going wrong with the field of this Mezan Karpora? It looks like there is something rubbed on their hands. I'm not sure it's. I'm sure it's not that butter rubbed on their hands. The catches are being put down anything like. Could have been wrapping the story. Once again, this time he goes. Not the problem this time for the same man. What a perfect style for this man to find that counter and find that revenge. Catch dropped on the first ball and a catch taken on the very next ball. 146 per 9. And the last man, Sadiq, he goes to the middle now.
He will be on the strike. It looks like he looked a bit hasty on that shot, Shaidura. Should have been a bit sensible because there was still one more over left after this gets done. And eventually, even you have managed to go beyond 140, but you have got 10 balls left. The plan needs to play these all 10 balls. Even you go run a ball, you go close to 156. And you never know, in the finals that can be some total for you to really defend. A psychological game, a psychological impact could be there. But only thing to see, you do not just surrender at this moment of the first innings. Mohammad Sadiq Dar, experienced cricketer, and his job at this moment will be try have a bit connection, have a bit contact, time the ball, just big gaps on either of the sides, and you can truly go for some more contribution of the runs. Abid Manzoor and Sahil Creation, thank you very much for loving. And outside off stump, it's a dot. The plan just looks not to be too much defensive. You have to be just a bit contacted, because if you have a ball on your blade, you still can manage to find and rotate the strike. 146 for 9, 9 balls to go, just 1 wicket in hand. Oh, he was trying to swing, the ball keeping low, nothing he could do. It's one more dot. It's been all the story of dot balls. Even a wicket has gone down. Are we going to see a double wicket maiden? We haven't just gone through a maiden over in this entire innings of Tilsara Gymkhana. Mix it one more. Even the current run rate approximately is just a bit 8, we could see, but the finish has not been up to the expectations. And he plays it straight to the point. Another dot. It's a wicket maiden. End of the over. 19 gone. It's 146 for 9. And I believe it will be Javed Shaban who bowls that last over. Yes, he gets ready. And time for the man, Butt Amir, who is batting 7 of 7, to do something magical from his blade. And is he going to come full of heroics in this last over? 6 balls, he has all to go. And he has just to conquer the world. He can go for some plenty in these last 6 balls. 5 minutes left to the 5 o'clock in the evening. Means the second innings starts around 5, rather 5:15. There might be a break of around 10 to 15 minutes on account of some refreshment. But are Tilsara Gymkhana going to refresh themselves in these last 6 balls with some mighty blows? And no, he was trying to swing it. A bit of confusion between the two, but finally they will have to settle with no run. It's a dot, another. 7 dot balls on the trot. Humayun Arif says that something, expecting something big from Sadiq Dar today. Down the track, straight down the ground, long chase for long gone, and I believe they will be just through for only a single, and Sadiq Dar on the strike. He has got 4 balls. Even he has played 4 balls, hasn't been able to open his innings, open his account, but now he gets more 4 balls to just offer some strokes in these last moments. And still 3 runs short of what would be 150 on the board. He's using his speed and going and dancing down. Oh no, he was swinging again. Just not able to have that connection. It's another dot. 147 for 9.
It looked like the plans were just quite visible that Tilsara Gymkhana looking to try and just go over 200, but the power play simply went against them. They lost 3 wickets, not too much on the board. Sadiq not able to have the ball just being connecting and meeting the blade. Truly is under pressure. 2 balls to go. Thank you Riaz Ahmed, thank you Humayu Arif. And is Sadiq going to go something really? Swings well, swings absolutely great to the square leg. 4 runs he will take. It's a 150 upon the board. And a lovely shot to get his innings on as well. A bit late, but very impressive. Last ball of the first innings, 151 for 9. And he goes again. This is drops. And in the meantime, the ball deflects and goes down to the widest long on for back-to-back boundaries for Sadiq Dar. Tilsara Gymkhana finished their first innings on 155. Somehow they have managed to get close to 160. It was not close exactly, but 155 for the loss of 9 in their allotted 20 could be something at least for the bowlers to really have a try on. Can they chase it down, or we see Mezan Karpora really looking sublime? And I believe power play, the first 6 overs are truly going to be crucial for the both sides. Let's find out, is Tilsara Gymkhana going to find some bundle of wickets, or Mezan Karpora going supreme in the power play for those runs in the first power play of 6 overs? Let's play which way the pendulum oscillates. Is it going to be on? Is it going to be off? Time will decide the same. You keep on connecting with Baba Nisar Sensation. We will take a break. We'll come back with the run chase. Till then, it's Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back in the second innings. As this time we are the Tujan cricket ground. The two teams we are locking the horns here in the Tujan ground. Tilsara Gymkhana versus Mezan Karpora. In the first innings, Mezan Karpora batting first, they have scored 155 runs. Now Tilsara Gymkhana will have to nail a chase of 156 runs to win this big title here in the Tujan cricket ground. We're just waiting this. Yesterday Tilsara Gymkhana, two batters who have just come on the crease, who will start, Mr. Irshad Ahmed Ganai and Shahid Nazir, and the bowler is Shabir Yusuf. This will be a nail-biting encounter as we are hoping for the same. It will be a great fight between the two teams as we are running in the final grand finale of this Tujan Premier League. Now we're waiting. Shabir Yusuf will be bowling the first over of this inning, and Tilsara Gymkhana, if we just take a look on the batting of Tilsara Gymkhana, lot of batters, a lot of big hitters, lot of cracking short playing players, lot of options left here for the Tilsara Gymkhana. So ready, first ball, Shabir Yusuf with long run up, crossing the umpire. Oh, that was a very low delivery and batsman was unable to play that ball. The ball remaining very low on that occasion, and batsman could not understand the ball. He was not expecting the ball to come in the way. So that was a very good delivery, and the start by Shabir Yusuf was very brilliant. Now he is just waiting for his second ball. Shabir crossing the umpire. Oh, this time want to heave for a big hit, and no connection between ball and bat, and wicketkeeper behind the stump is collecting the ball very cleanly on that occasion. The batsman was trying to heave for a bang shot, but no connection between ball and bat. And Shabir Yusuf will be very happy. Two dot deliveries in his first over. Now waiting for the third one, crossing the umpire. Oh, that was another great delivery. The ball was coming into the middle stumps, and the batsman just played a stoppable shot. He just adopted the defensive approach on that occasion. No run resulted. 3 dot deliveries in a row. Shabir Yusuf is bowling brilliantly. He is bowling on the nice spots. He is banging on accuracy. Shabir Yusuf now waiting to deliver fourth delivery. Irshad Ahmed Ganai, who has faced 2 balls and has not scored a single run. Shabir Yusuf with a long run up, crossing the umpire. Batsman, oh, this time that was another great delivery, and the batsman was beaten by the beauty of that delivery. So 4 dot deliveries in a row. 4 dot deliveries. This is the brilliant bowling. He is bowling on the nice spots. He is bowling on the right spots. This is the way how Karpora will have to track on. Bowler crossing the umpire this time. Oh, dropped. You should not let down these catches. These are the initial moments for the game. You cannot let down these catches. This was an easy catch for the slip fielder, and this is a big blunder by the slip fielder. If you let down these catches, you can never win the matches. 1 ball remaining in this first over from Shabir Yusuf. Shabir Yusuf gave the hope, but they could not grab that hope. Bowler crossing the umpire. Oh, that was another great delivery. And maiden over has been completed by the Shabir Yusuf. So with the completion of over number 1, no run on the total from the Tilsara Gymkhana, and Shabir Yusuf's over has been very glorious and brilliant.
It was a superb over bowled by Shabir Yusuf. He has not given a single run in his first over. And one drop catch. One drop catch. He will be repenting for the same for a long, long time. This was an important opportunity which was missed by Mezan Karpora. This team is also looking very good. I was not knowing that they have such good players, but this team has been prepared. It has been synthesized in a very brilliant way. Next bowler is Ishfaq Ahmed, crossing the umpire. Oh, very bad delivery, and it has been treated for 4 runs. So first 4 coming from the bat of the batsman, and the ball raced to the boundary line for 4. It was Shahid Nazir. That was a wrong delivery, and batsman punished that in a very stylish manner for 4 runs. Ishfaq now ready. He will be bowling his second ball, but that was not a good delivery. It was going far away from the leg stump, and batsman played very beautifully on that occasion, and ball raced to the boundary line for 4 runs. Waiting for the second ball, crossing the umpire. Oh, this time a very good delivery, and slip fielder is very quick, and one more time no run resulted, and score stays at 4 for the loss of no wicket. This is the first recognized pair, that is Shahid Nazir and Irshad Ahmed Ganai. Their role is just to remain on the wickets, and the scoreboard will tick. It will momentize. Already this time played beautifully, but cannot beat the slip fielder on that occasion. This is a brilliant fielding, spectacular fielding. You have to be very tight. You need to go through in a very tight spot, through tight spots, because score is very low as far as this ground is concerned, as far as the 2020 format is concerned. So you have to be brilliant with ball. Oh, this time asking for the umpire, and he's gone. He is given on that occasion. So first blood dropped here for the Tilsara Gymkhana. 1 down for 4. This is not a good news here for Tilsara Gymkhana, as the first, bigger pardon, for Karpora, as first batter has gone to the pavilion for just 4 runs. Irfan Hamid is the next batter who will be coming on the crease. $155 is not a big total so far as this Tujan ground is concerned, but they need a partnership here. Desperate, because I was repeatedly telling that this Tilsara Gymkhana, it is one of the mightiest team, because yesterday they played very brilliantly against Lasipura. Although they have lost that game, but they played very brilliantly. They fighted till the last moment here. So because they have some very good all-rounders, excellent bowlers, excellent fielders. This team is known for their big fights, because I have seen many number of times that they're fighting against the Tujan Falcons team. So if we talk about this area, Tilsara Gymkhana is one of the great team. It is one of the fighting team. So for them, 155 is not a big total. Ishfaq crossing the umpire. Oh, that ball was very quickly coming to the batter, and batsman could not play that ball. Just defensive approach adapted to the batsman on that occasion. Irfan Hamid, 1 ball remaining from the second over of the inning from Tilsara Gymkhana. Ishfaq with long runner, crossing the umpire. Our batsman this time played a stoppable shot. No run resulted one more time, and the score stays at 4 runs for the loss of 1 wicket. So 2 done, 4 on the board, and 1 wicket has already gone. For those who have viewed on the Baba Nisar YouTube channel, very late I will be telling that this is the grand final played here in the Tujan cricket ground between Tilsara Gymkhana versus Mezan Karpora. Earlier on, Tilsara Gymkhana
Batting first, they have scored 155 runs. Now nailing a chase of 55 runs. Mezan Karpora scoring just 4 runs, and they have lost a very important wicket in the very first over, second over. Shabir Yusuf crossing the umpire. Oh, this time chance up, catch it. We have to wait and watch. Oh, dropped one more time. We have seen number of catches being dropped here in the Tujan ground. This was an important opportunity here for the. This was a great opportunity here for the Mezan Karpora. Beg pardon for Tilsara Gymkhana, but they could not grab that opportunity. This is the catch number second they have dropped in the same. The bowler was the same. That is Shabir Yusuf. Shabir Yusuf is very unlucky today because 2 catches have been dropped in the over of Shabir Yusuf. Now waiting to deliver. Oh, this time. Oh, no run resulted one more time. Beg pardon, 1 run resulted on that ball. Shabir Yusuf is trying his level best. He is trying his level best, but the fielders are not supporting him properly because 2 drop catches in the over of Shabir Yusuf. Now waiting. Crossing the umpire, this time played, but not power behind that shot, and 1 run resulted. With that, single score has now gone to 7 for the loss of 1 wicket. Mezan Karpora need to create a partnership here. There is desperate need of partnership for Mezan Karpora if they have to win a very important title here in the Tujan ground. Batsman batting, and this time played one more time, not power behind the shot. There is not proper connection between bat and ball, and I think that this total of 156 is looking very difficult now for Mezan Karpora. Shabir Yusuf will be delivering his 5th ball. Oh, this time played, and that is 4 runs. The ball raced to the boundary line like a bat, and no chase for the fielder, and ball raced to the boundary line for 4 runs. So 3 overs have been completed, and Tilsara Gymkhana just fighting very bravely, and Mezan Karpora just scoring 12 runs on the board, and 1 wicket has already departed. So 3 done, 12 on the board, and 1 wicket gone for Mezan Karpora. If Mezan Karpora have to win this big title here in the Tujan ground, then there is a very important need of the partnership. Ishfaq Ahmed has been brought into the attack. Ishfaq crossing the umpire. Another chance, 1 more chance dropped. This is the catch number 3rd, which has been dropped by Tilsara Gymkhana. There was another great opportunity for Tilsara Gymkhana to grab that catch, but they let it down. Ishfaq Ahmed now ready 1 more time. Ishfaq crossing the umpire. Batsman played brilliantly on that occasion, but not much power behind that shot, and this will result just a single. And the score has slowly gone to 13 for the loss of 1. Irshad Ahmed Ganai is playing on 6 from 10 balls, and Irfan Humid, who has just come on the crease, who is on 3 from 6.
Ishfaq. Waiting. He will be bowling to the Irshad Ahmed Ganai. Lot of responsibility now shouldering on. This time played very well, but one more time, not power behind that shot, and just a single resulted. Ishfaq Ahmed will be now bowling the fourth ball of this over to Irfan Hamid. As the ends have been changed now, Irfan Hamid has come on the strike. Ishfaq crossing the umpire. Oh, that is a wide delivery. Question being asked to the umpire, but umpire says that ball has gone far away from the leg stump. So no need to worry for Tilsara Gymkhana here. Batsman is safe on the crease. He's safe on the home. Ishfaq, one more time waiting. Long run for Ishfaq, crossing the umpire. Oh, that was a great delivery. One more time, question being asked to the umpire. But in the meantime, ball crossing to the boundary line for 4 runs in the form of byes. So lucky run is coming to the side of Mezan Karpora. And score has now gone to 18 for the loss of 1 wicket. 18 for 1. Ishfaq Ahmed is trying his level best. He is trying to use his steam engine. Ishfaq crossing the umpire. Oh, that is a good shot. That is a good shot, but brilliant fielding on that side. And the batsman is just satisfied with a single. Over. One more over has completed with the completion of over number 4. Score for Mezan Karpora is 19 for the loss of 1 wicket. So 4 overs gone. Score is 18 for the loss of 1 wicket. Big important is 19 runs for the loss of 1 wicket. 2 batters who are playing at this stage is Irfan Hamid and his partner, that is Irshad Ahmed Ganai. Irshad and Irfan will have to tile up. They need to remain on the wickets. They need to create a partnership. They need to have a complete control on their nerves. They need to hold their nerves. They need a patience because these are the initial stages of the game. So if they will remain on the wickets for another 4 or 5 hours, the situation of the match will automatically get clear. They will dictate the terms because they can read the ball very correctly. But for them, staying on the wickets does play an important role. Shabir Yusuf now ready, and Shabir Yusuf has been quite brilliant and quite unlucky as well because 2 catches have been dropped in his over. Shabir Yusuf crossing the umpire. Oh, that is a great shot and a catch as well, and gone. So second wicket departed here for Mezan Karpora, and they are now in trouble. Shabir Yusuf picking his first wicket because 3 catches have been dropped in the over of Shabir Yusuf, and this time Shabir Yusuf got the opportunity in getting that wicket of the Irfan. So congratulations to Shabir Yusuf because he worked hard, he worked effortlessly, he labored hard, and he got the result. He got his fruits. Although 3 catches have been dropped in the same over of the Shabir Yusuf, but this time Shabir Yusuf got his luck. He got the opportunity and he got the wicket as well. Batsman name. Irshad Ahmed Ganai is still there. He's on 7 from 11. He's playing like a wall there. Hey Irfan sir. Hey Irfan. Oh, batsman name. So far as this team of Mezan Karpora is concerned, Adil Manzoor is the next batter who has just joined the party. How much fruitful will be the Adil Manzoor? It is all which will time tell us, but at this
stage of the game, Mezan Karpora have been let down, and Tilsara Gymkhana right at the top of the tree. Okay. Bowler crossing the umpire. Oh. And there haven't been a proper connection so far as I'm seeing. I have not seen one proper cricketing shot played by this team of Mezan Karpora. Connection between bat and ball seems very difficult for Mezan Karpora. Shabir Yusuf waiting, crossing the umpire. Oh, this time, oh, another great chance, and the ball goes to the boundary line for 4 runs. This was another good chance for the slip fielder, but the ball passed like a bat to the boundary line for 4 runs. So I think Shabir Yusuf is quite unlucky to. This is the catch number 4th, which has been dropped in the same over Shabir Yusuf. Shabir Yusuf will be repenting because fielders have not supported him properly. Shabir Yusuf is quite unlucky today because here none of the fielders from Tilsara Gymkhana have supported him. Easy catches have been dropped in his over. And Mezan Karpora, they are lucky. Now they need to utilize their opportunity because maximum number of catches have been dropped from Tilsara Gymkhana. Shabir Yusuf, very, very unlucky today. Oh, this time played very beautifully, but just a single. With the addition of that single, score is now gone to 24 for the loss of 2 wickets. Not a good news for Mezan Karpora because 2 batters are already sitting in the dugout and score is just 24. 4.4 overs have gone and 24 is the score for Mezan Karpora. They need a partnership. They need to rotate the strike, and in every over one big shot is needed. Oh, this time want to go for a big shot. Batsman was willing to go for a bang shot, but no connection one more time between bat and ball. Shabir Yusuf using his intelligence, he is bowling brilliantly, he is bowling on the nice spots. Credit must be given to the Shabir Yusuf. The way he is bowling, it is very, very brilliant. 100 out of 100 marks goes to Shabir Yusuf. Crossing the umpire. Oh, another good delivery. And the batsman was beaten. One more excellent over. Excellent and superb over from Shabir Yusuf comes to end, and 5 gone. 24 on the board, and 2 batters have already gone. So, not a good news here for the Mezan Karpora. Nailing a chase of 154 runs. They have scored 24 runs and 2 wickets have already gone. 132 runs needed from 90 balls. And it looks a very, very difficult job for Mezan Karpora.
Excellent, let's wait. So match has started again, and Shabir Yusuf, Shahid Hurra is the next bowler who has been brought into the attack, and that was a dot delivery, first dot from Shahid Hurra, and Shahid Hurra is also one of the best bowler from the side of Tilsara Gymkhana, crossing the umpire. Oh, that was a good delivery, it was coming to the wickets, and luckily for the batsman, the ball didn't hit the stamens here. Second dot from Shahid Hurra, and the score stays just at 24 for 2. Shahid Hurra crossing the umpire. Oh, another good delivery, 3 dots in a row, hat-trick of dots from Shahid Hurra, and the score is just at 24. It's 6. Complete dominance from Tilsara Gymkhana. Bowler crossing the umpire. One more dot delivery, and this is the dot number 4 from the over of Shahid Hurra. Shahid Hurra is bowling brilliantly, but I think it is complete pressure on the Mezan Karpora. They need to come out of this pressure. One big hit needed, 1 6 or 4 needed if they have to come out of this pressure. Oh, this time they did it, and ball raced to the boundary line for 4 runs. The batsman bisecting the ball between the 2 fielders, and the ball raced to the boundary line for 4 runs. This time the batsman took the opportunity and bisecting the ball between the 2 slip fielders, and the ball raced to the boundary line for 4 runs. This shot was very, very important for the Mezan. This time played with defensively, and the batsmen have all the time in the world to come across for a single. Over! So 6 overs have been completed, and score is 29. So power play gone, 29 on the board, and 2 batters already sitting in the dugout. If we just take a look on the bowling of Tilsara Gymkhana, Shabir Yusuf has been quite brilliant, and Shahid Hurra in his first over he has just given 5 runs, and he has bowled very brilliantly. 4 dot, 1 4 and 1 run. Ramiz. Next bowler who has been brought into the attack, it is Ramiz. Mezan Karpora need to put the foot on the accelerator. Some batter will have to play a bang shots. Some cracking shots needed here for Mezan Karpora. Pressure have to come out. If they have to release the pressure, some bang shots needed. Some mighty hits needed. Some cracking shots are waiting for the spectators of Mezan Karpora. Oh, that was a good delivery. That was a good delivery. And spinners have, in the meantime, chance of a run out. No. Oh, question being asked to the umpire for the run out. The batsman was safe in the home. So no damage done for Mezan Karpora, and score is 30 for the loss of 2 wickets. 6.1 overs have already been bowled. If you just take a current run rate, it's 4.88, and the asking run rate is 9.11. Oh, this time played very beautifully. This time the batsman played very beautifully for 6 runs. This was a flat 6 played by the batsman. What a shot on that occasion, and Mezan Karpora need to accelerate in the same way. This is the way. In every over they need to at least 1 6 or a 4. So first proper cricketing shot I am just seeing from the hands of
from the blood of Mezan Karpora. Some sort of problem with the muscles of the batsman. So in the meantime, I will be telling you some sort of problem. I see muscle cramps will be there for the batsman. So the play has been stopped for some time. As the play resumes, we will be coming back.
Tulsa, lots of. So we will be coming back. Many number of misfortunes here for the Al Mezan, as one batsman has already retired hurted, and the next batter who came on the crease, he just gone for a golden duck. And the next batter who has just come on the crease is Javed Shaban. Not good news for Al Mezan Karpora. Bowler crossing the umpire. Oh, another good delivery. Batsman could not understand that ball. That was another great and special delivery for the batsman, and the batsman could not understand that ball. Al Mezan Karpora in a complete crumble. They are hurling. They are in a quite hurry here. They are just in a tension. They are under pressure. They are feeling the heat here in the Tujan ground, and it is complete domination of Tilsara Gymkhana. Although they have lost to the semi-final yesterday, but they are fighting bravely. They are about to win this final. Oh, that was another great delivery, and the batsman was beaten by the beauty of delivery. Shahid Hurra is bowling on the right spots. He is bowling on the nice spots. He is bowling brilliantly. Hurra crossing the umpire. Oh, there was another chance. Tight fielding by the Tilsara Gymkhana, and a great athletes from the side of Tilsara Gymkhana. They are never allowing the batsmen to change their ends at this stage of the game. The batsmen have gone for 1 run, and Adil Manzoor has now gone to 12 from 12. Javed Shaban has yet to open his account. Oh, that was a wide delivery. That was a wide delivery, and another added to the total is now 38 on the board for the loss of 3. 118 runs needed from 76 balls. It looks difficult and difficult. Oh, this time played very brilliantly. We have to wait and watch. Just a 1 run resulted, and there has not been a proper connection right from the start of the innings of Al Mezan Karpora. That is why score has just stayed at 39 for 3. Bowler crossing the umpire, and just a 1 run. If Al Mezan Karpora have to win this final here in the Tujan ground, then they have to come out of this pressure. These two batters will have to build a partnership, and they have to play some good shots. This time played brilliantly. Oh, missed you. That is a misfielding, and the ball raced to the boundary line for 4 runs. This was a fumble from Tilsara Gymkhana. That was an easy stop, but the ball raced to the boundary line for 4 runs, as the fielder could not stop that ball. So lucky run is coming to the side of Al Mezan Karpora, and score has now gone to 44 for 3. Just 6 short of 50. 7.5 overs have already gone. 1 ball remaining of this over. Shahid Hurra waiting. He is bowling very cleverly, as he is trying to bring the ball into the stumps. This is the nice strategy adopted by the bowler. His thoughts look quite evident and clear. He wants to just go for dot balls. Shahid Hurra waiting, crossing the another good delivery. He is not enabling the player to go for the shots. So 1 more over completed. It's 8 over completed. 44 on the board, and 3 batters have departed.
रखा है। Sumanza 5-4 akat zoom karın akat zoom चलो सो दोबारा आपका खुशामदीद यहाँ तुजन के ग्राउंड में। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और जो बैट्समैन है मजबूर हो गए एक रन खेलने के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा छक्का लगाया बैट्समैन ने और उम्मीद अभी भी जिंदा है यहाँ अलमीज़ान कारपोरा के लिए। अगर इनको ये मैच जीतना है तो 100 रन बनाने। अब मेरा जो यहाँ पर स्कोर बोर्ड है वो साफ दिखाई दे, 100 रन चाहिए। 67 गेंदों पर 67 गेंदों पर बहुत ही अच्छा खेला है। मुझे लगता है अब बैट्समैन एक ऐसे लाइन में आ गए, एक पावर में आ गए हैं। अब इनको गेंद जो है बिल्कुल नज़र आ रही है, अब सीधे गेंद इनको खेलना भी आ रहा है। अलमीज़ान कारपोरा को अब चाहिए कि यहाँ से जो है विकेट्स ना दे और साथ साथ में अच्छे खेल का मुजाहरा करें। लेकिन मेरी नज़र जहां तक जा रही है, अगर अलमीज़ान कारपोरा का इस मैच में वापस आना है और यहां पर अगर उनको फाइनल जीतना है तो इन दो बैट्समैनों को ज़रूरी है विकेट पर डटे रहना है, बिल्कुल लड़ना होगा। आखिर पर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है और साथ साथ में बीच बीच में एक बड़े छक्के और चौके की ज़रूरत है। और इस ओवर में हमने देखा था ये जो छक्का लगाया था बैट्समैन ने, इससे इसकी कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद वापस आ गया है। और ऐसा दिखाई देता है कि अलमीज़ान के जो स्पेक्टेटर्स हैं बड़े खुश हैं, वो अब चाहते हैं कि ये प्लेयर बहुत देर यहाँ तक रहे। शाहिद हुर्रा चले, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद शाहिद हुर्रा के, लेकिन इस दौरान वक्त था बैट्समैन को अपने एंड चेंज करने के लिए और 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त आदिल मंजूर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हुई है और इस गेंद को खेला है, बहुत ही खूबसूरत खेला, गैप निकाला है इस वक्त, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है और रन बनेंगे सिर्फ 1। इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 59 रन हो गया, 59 3 विकेटों के नुकसान पर। और आदिल मंजूर अब अपनी लाइन में आ गई है, 26 रन 19 गेंदों पर बनाए हैं इसने। शाहिद हुर्रा चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेला है, बहुत खूबसूरत खेला है और गेंद गोली की मानन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। एक और खूबसूरत चौका यहां अलमीज़ान कारपोरा की जानिब से और स्कोर जल्दी जल्दी पहुंचता हुआ 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आदिल मंजूर अपनी टीम को यहां पर उम्मीदें जगाता हुआ और 7वें आसमान पर उम्मीदों को उठाता हुआ आदिल मंजूर 30 रन पर पहुंच गया 20 गेंदों से। शाहिद हुर्रा चौथी गेंद के साथ, पहले 2-3 ओवर शाहिद हुर्रा ने बहुत अच्छा की थी, लेकिन आदिल मंजूर लाइन में अब आ गए और इस गेंद को भी खेला और 1 रन के लिए अब गैप यहां पर ढूंढ रहे हैं और ऐसा करना होगा यहां पर आदिल मंजूर को। और जावेद शाबान भी उसका साथ दे रहा है, 7 रनों पर खेल रहे हैं 8 गेंदों से। 64 3 विकेटों के नुकसान पर अलमीज़ान कारपोरा। और अलमीज़ान कारपोरा के तमाशाई बहुत खुश दिखाए। हुर्रा चले, बहुत ही बढ़िया गेंद और बोल्ड कर दिया इस बार शाहिद हुर्रा ने। मैं लगातार बता रहा था कि शाहिद हुर्रा बहुत ही अच्छी गेंदें कर रहा था, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान अलमीज़ान कारपोरा के लिए। चौथा विकेट डग आउट की तरफ जाता हुआ और स्कोर जो है 64 रन। अलमीज़ान कारपोरा तसल्ली दे रहा था कि ये पार्टनरशिप यहाँ पर ठहर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आदिल मंजूर वहाँ पर डटे हुए 31 रनों पर 21 गेंदों से, लेकिन किसी और बैटर को यहाँ पर ठहरना होगा अगर यहाँ पर कारपोरा को ये फाइनल में कामयाबी हासिल करनी है। शाहिद हुर्रा ने एक अहम मौके पर यहाँ विकेट दिलाया तिलसरा जिमखाना को। बैट्समैन नेम शाहबाज मंजूर नए बैट्समैन हैं
जो क्रीज पर आए हैं शहबाज मंजूर के मुतलिक तो यही बताएगा जो मेरे साइड से हैं कि शहबाज मंजूर कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो शहबाज मंजूर को मैं उतना नहीं जानता हूं, लेकिन शहबाज मंजूर को चाहे कि विकेट पर ठहरे, साथ दे आदिल मंजूर का, बस साथ चाहिए आदिल मंजूर को। अगर साथ मिला आदिल मंजूर को तो हम तवक्का करेंगे कि यहाँ पर कुछ लड़ाई वो लड़ सकते हैं तिलसरा जिमखाना के खिलाफ। लेकिन शाहिद हुर्रा ने एक अहम मौके पर अपनी टीम को विकेट दिलाया। 64 रन स्कोर है इस वक्त अलमीजान कारपोरा का। 4 विकेटों के नुकसान पर 9.5 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हुआ है। इसका मतलब है कि इसके बाद सिर्फ 10 ओवर रहेंगे यहाँ पर अलमीजान कारपोरा के लिए। 60 गेंदें बची हैं, 61 गेंदें बची हैं। इसके बाद 60 गेंदें यहाँ पर बचेंगे और रन चाहिए 92 रन। 92 रन नीडेड फ्रॉम 61 बॉलर्स। मैं कह सकता हूं कि ये कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप की ज़रूरत है। कम से कम एक 30-40 रनों का शॉट कैमियो यहाँ खेलना होगा इन दोनों को, शहबाज और आदिल को, अगर इन्हें फाइनल में कामयाबी हासिल करनी है। शाहिद हुर्रा आखिरी गेंद के साथ बहुत खूबसूरत गेंदें खींच रहे हैं बैट्समैन को, कभी गेंद को अंदर ला रहे हैं, कभी गेंद को बाहर मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान कर रहे हैं बैट्समैन को। हालांकि एक छक्का एक चौका यहाँ दिया शाहिद हुर्रा ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉलिंग है शाहिद हुर्रा की वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही लाजवाब कमाल की बॉलिंग शाहिद हुर्रा की जानिब से, बिल्कुल बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं। ये जो विकेट टू विकेट ऑप्शन रखा है शाहिद हुर्रा ने, इससे बहुत फायदा आता है यहाँ पर तिलसरा जिमखाना को। और तिलसरा जिमखाना बड़ी उम्मीद यहाँ पर जगाई हुई है शाहिद हुर्रा पर। शहबाज मंजूर नए बैट्समैन आए हैं, विकेट पर ठहरना होगा, जस्ट विकेट पर ठहरना होगा और साथ देना होगा यहाँ आदिल मंजूर का। शाहिद हुर्रा आखिरी गेंद के साथ सोचते हैं कि किस स्पॉट पर गेंद को यहाँ मैं ड्रॉप करूंगा। थोड़ी सी बातचीत अंपायर और बॉलर के दरमियान, दोबारा से खेल जो यहाँ रिज्यूम हो रहा है। ऑलमोस्ट ये इक्वेशन जो है मुझे लग रही है, मेरी ओपिनियन के हिसाब से ये 70 जो है 70-50 जा रही है। अगर एक बैट्समैन यहाँ पर डरता है तो सिचुएशन जो बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार कुछ समझ नहीं पाया बैट्समैन कि गेंद को कैसे खेलूंगा, और शाहिद हुर्रा की ये गेंद और ये ओवर भी यहाँ पर समाप्त हुआ 10 ओवर के इख्तिताम पर। स्कोर जो है अलमीजान कारपोरा का 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और यहाँ से आधा सफर जो है मुकम्मल हुआ है अलमीजान कारपोरा के लिए। 60 गेंदों से अब 92 रन चाहिए अलमीजान कारपोरा को इस फाइनल को जीतने के लिए। उर्दू रमीज चले, अंपायर को क्रॉस गेंद को खेला और बहुत ही खूबसूरत खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात। सिर्फ एक ही रन का इजाफा यहाँ स्कोर बोर्ड में, और स्कोर बोर्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। इसके साथ स्कोर 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शहबाज मंजूर को साथ देना होगा आदिल मंजूर को, विकेट पर ठहरना। अभी भी 1-2 बैट्समैन ऐसे हैं या मेज़ान कारपोरा की तरफ से जो मैच दिला सकते हैं यहाँ पर। इस गेंद को खेला, बहुत ही खूबसूरत कट, लेकिन वहां इतनी खूबसूरत फील्डिंग और रन आउट का चांस। सो बाल यहाँ पर बच गए बैट्समैन, बाल बचे। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो काम तमाम होता। रमीज की गेंदें भी परेशान यहाँ पर बैट्समैन को कर रही हैं। 2 गेंदों पर 2 रन हुए हैं रमीज के इस ओवर में। आदिल मंजूर अब क्रीज पर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आदिल मंजूर कैसे खेलता है सुपनर के खिलाफ। खेला है बहुत ही खूबसूरत, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
दो खिल्डरों के दरमियान से गेंद को निकाला है गैप में और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। एक और खूबसूरत शॉट यहां पर मेज़ान कारपोरा की जानिब से। स्कोर अब बढ़ता हुआ 70 रन हो गया है 4 विकेटों के नुकसान पर। यही सलाहियत है आदिल मंजूर में, गैप्स निकालते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं और गेंद पढ़ते हैं। बिल्कुल इनको गेंद नजर आ रही है फुटबॉल की तरफ से, जहां डटे हैं क्रीज पर। रमीज एक और गेंद के साथ चले, अंपायर को क्रॉस गेंद को भी खेला है लेकिन यहां पर उतनी जान शॉट में नहीं है। सिर्फ 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 72 रन हो गया है 4 विकेटों के नुकसान पर। माफ कीजिए 71 रन जो है यहां पर बन गए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर 10.4 ओवर का। और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। रोक लिया गया, आखिरी हवाएं में गेंद को रोक लिया गया यहां पर। और देखेंगे कि रन कितने बनेंगे। ये 22 की सूरत में आए हैं। (10.5 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ और स्कोर 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रमीज आखिरी गेंद डालेंगे सब इस ओवर की, 11वें ओवर की। 9.16 है रिक्वायर्ड रन रेट, गेटेबल है ये, चेजेबल है ये। बॉलर ने अंपायर गेंद को खेला है, बहुत ही खूबसूरत खेला है। देखना है कि 4 रहेंगे कि नहीं। और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के। एक और खूबसूरत स्ट्रेट शॉट यहां आदिल मंजूर के बैट से और गेंद गोली की मानन बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। 41 हो गया आदिल मंजूर का स्कोर। 76 हो गया यहां मेज़ान कारपोरा का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। आदिल मंजूर को साथ देना होगा। शाहबाज मंजूर को यहां पर 41 पर पहुंचे 25 गेंदों से। इसके साथ रमीज का ये एक और ओवर इख्तिताम हुआ। मुझे लगता है कि आदिल मंजूर बिल्कुल गेंदों को अब पढ़ रहे हैं, गेंदें इसको समझ आ रही हैं और वो अब चाहते हैं और थोड़ा सा यहाँ रेस्ट दिया जा रहा है। स्कॉर्चिंग हीट की वजह से जो है फील्डर्स मशवरा कर रहे हैं और हम भी थोड़ी सी ब्रेक यहाँ पर देंगे। किसका बॉलर साजिद
सो खेल दोबारा से शुरू हो गया है और अलमीज़ान कारपोरा की ये जो टीम अपनी झलकियाँ दिखा रहे हैं, अब ये अपनी लाइन में आ गए हैं, अपनी लाइन में आ गए हैं और इस गेंद को भी खेलना चाहते थे बहुत ही ख़तरनाक ढंग से, लेकिन गेंद बैट पर आई नहीं और किसी रन का इजाफा नहीं। बट साजिद को यहाँ पर लाया गया है मोर्चे पर और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 9 से नीचे जो है रन रेट आई थी यहाँ पर अलमीज़ान के लिए रिक्वायर्ड रन रेट। बट साजिद चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को गाइड किया है, लेकिन रन यहाँ पर बन जाएंगे क्योंकि खिल्डर वहाँ पर तैनात है। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 77 हो गया है 4 विकेटों के नुकसान पर। अलमीज़ान कारपोरा को अब चाहिए कि ये मैच बड़ी मजबूती के साथ पकड़ ले आगे से, क्योंकि आदिल मंजूर वहाँ पर डटे हैं। 41 रन उन्होंने बनाए और 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और अब वो स्ट्राइक पर आएंगे और ये देखने वाली बात होगी कि बट साजिद के खिलाफ वो कैसे खेलेगा। बट साजिद चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेला है लेकिन किसी रन का इजाफा नहीं। यहाँ पर फंबल हुआ है और इस दौरान बैट्समैन कामयाब हो गए 1 रन हासिल करने में। ऐसा नहीं करना होगा तिलसरा जिमखाना को। इस 1 रन के साथ स्कोर 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आहिस्ता आहिस्ता अब 78 रन बनाने होंगे 51 गेंदों। इसका मतलब है कि मुमकिन है, अच्छी तरह से मुमकिन है यहाँ पर कारपोरा के लिए। और इस गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ही ख़तरनाक ढंग से ये गेंद आई बट साजिद की और बैट्समैन बिल्कुल ही समझ नहीं पाए इस गेंद को, रीड नहीं कर पाए इस गेंद को और किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदों से भी 2 रन आए हैं, 2 डॉट डिलीवरीज हुए हैं और 2 रन आए हैं। 2 गेंदों पर 1 रन आई है और स्कोर जो है 78 रन पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस गेंद को खेलना चाहते, एक बहुत बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 3 डॉट डिलीवरीज इस ओवर में हुए हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी खबर नहीं है अलमीज़ान के लिए और तिलसरा के लिए अच्छी खबर है। बॉलर ने अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेलना चाहते थे, दोबारा से बीट हो गए और ना रन बनी और दोबारा से बीट हो गए। यहाँ ओवर थ्रू हुआ और इस दौरान ओवर थ्रू के दौरान यहाँ पर 1 रन का इजाफा हुआ। बड़े नाराज लग रहे हैं यहाँ पर बॉलर से। सो इस ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जो है 79 हो गया है 4 विकेटों के नुकसान पर। ये ओवर जो यहाँ पर किया बहुत ही अच्छा साबित हुआ है ये ओवर। मुश्किल। सो 12 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जो है 79 रन हो गया है 4 विकेटों के नुकसान पर। ये बट साजिद का ये जो ओवर था बहुत ही बढ़िया ओवर मैं कह सकता हूँ, कमाल की बॉलिंग की यहाँ पर बट साजिद ने, बिल्कुल मौका नहीं दिया आदिल मंजूर को खेलने के लिए और ऐसा ही करना होगा तिलसरा जिमखाना को अगर इन्हें इस फाइनल में कामयाबी हासिल करनी है। और इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगा कि अलमीज़ान कारपोरा को चाहिए कि कम से कम 5, 6 या 7 रन हर ओवर में करें। इस वक्त 77 रन चाहिए 48 गेंदों से। इसका मतलब है कि अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करेंगे तो ये अच्छी तरह से चेज हो सकता है, क्योंकि करंट रन रेट जो है वो 6.58 है और रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 8.89 है। T20 में 10 से ऊपर जो है खतरनाक रन रेट मानी जाती है। 9.63 जो है वो रिकॉर्ड रन रेट है और करंट रन रेट जो है वो 6.58 है। इसका मतलब यही लग रहा है कि यहाँ से कुछ बड़े हिट्स दरकार है अलमीज़ान कारपोरा को। 77 नीडेड फ्रॉम 6.58 जो है करंट रन रेट। 48 गेंदों से 77 रन चाहिए। 2020 में इसको गेटेबल माना जाता है, लेकिन ऐसा कर पाएंगे आदिल मंजूर? बहुत जिम्मेदारी आदिल मंजूर पर आ गई है कि अगर आदिल मंजूर यहाँ से हीरो बनने में कामयाब हो गए तो कुछ करेंगे तो तभी हीरो बनेंगे यहाँ तुजन के ग्राउंड में। और पहली बार मैं देखूंगा कि जो अलमीज़ान कारपोरा है वो फाइनल जीतेगी। है मैंने बहुत बार यहाँ देखा है कि अलमीज़ान कारपोरा भी फाइनल में यहाँ पहुँची नहीं है। एक मौका आया है इसके लिए फाइनल में पहुँचने और अब यहाँ से इस फाइनल को जीतना होगा।
कि पहली बार उनको मौका आया है इस फाइनल को जीतने के लिए, तो इस फाइनल को जीतना ज़रूर पड़ेगा यहाँ पर। और तो यहाँ से एक बड़ी अनाउंसमेंट तुजन के तमाशाइयों के लिए, तुजन के तमाम लोगों के लिए कि जो बड़ा टूर्नामेंट जिसकी इनाग्रेशन हुई थी 2 अगस्त को, SST टूर्नामेंट, जो मोहम्मद शफी शेख साहब जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जो यहाँ पर पुलवामा में वो चलाते हैं, तो उसी के नाम से उनका चल रहा है वहाँ पर फंड। तो उन्होंने ये जो टूर्नामेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर खुलाया है, SST टूर्नामेंट जिसके नाम से, तो उसका फाइनल अनाउंसमेंट हुआ है। तो ग्रैंड फिनाले इसका है वो जुमा के दिन यानी फ्राइडे को खेला जाएगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम तमाशाइयों से जो भी इस इलाके से बिलोंग करते हैं कि 2 टीमें जो यहाँ फाइनल में पहुँची हैं, एक है लासीपोरा की टीम और दूसरा है प्रसिल पुलवामा की टीम। दोनों पुलवामा की टीमें जो है यहाँ फाइनल में पहुँची हैं। तो एक बड़ा फाइनल होगा, मज़ेदार फाइनल होगा, एक टाइटैनिक क्लैश होगा यहाँ पर, बड़ा फाइनल होगा यहाँ पर। तो सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, तमाशाइयों को भी और यहाँ के लोगों को, कि जुमा के दिन छुट्टी का भी दिन होता है जुमा के दिन, तो जुमा के दिन आप आइए और यहाँ पर आप बाबा निसार यूट्यूब चैनल जो है एंजॉय कीजिए, अच्छी तरह से यहाँ पर आ जाइए। जुमा के दिन बड़ा सा टूर्नामेंट जो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शफी साहब ने खुलाया है। एक बड़ी अनाउंसमेंट जो अभी हमने की है वो यही है कि जो SST टूर्नामेंट जिसकी इनाग्रेशन स्पीकर असेंबली अब्दुर्रहीम राथिर साहब ने की थी, तो उसका फाइनल जो है जुमा के दिन खेला जाएगा यहाँ तुजन ग्राउंड में। एक दिन बचा है, कल थर्सडे है, तो फ्राइडे के दिन खेला जाएगा। और रमीज़ को दोबारा यहाँ से आजमाया गया है। लास्ट जो ओवर था रमीज़ का वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ था। अब दोबारा से कैप्टन जो है भरोसा कर रहे हैं रमीज़ पर। क्या करेंगे रमीज़, देखने वाली बात होगी। अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन नहीं खेल पाए। कुछ ना कुछ करना होगा, कनेक्शन यहाँ बैट के साथ ज़रूरी होना चाहिए। खामोश है बल्ला यहाँ बैट्समैन का, और इस बार भी खेलना चाहते, दोबारा खामोश किया यहाँ रमीज़ ने बैट्समैन को। शहबाज मंजूर को चाहिए कि वो स्ट्राइक रोटेट करे और आदिल मंजूर को ज़्यादा मौका दे। और खेला इस बार बहुत ही खूबसूरत खेला है, 1 रन के लिए बहुत अच्छा किया यहाँ पर। शहबाज मंजूर को ने एंड चेंज किया, यहाँ मौका दिया, क्योंकि आदिल मंजूर 42 रन पर खेल रहे हैं, जमे हुए विकेटों पर। गेंद उसको बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आ रही है। अब रमीज़ के खिलाफ कैसी रणनीति अपनाता है, ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। रमीज़ की गेंदें अंदर आ रही है, बिल्कुल विकेट टू विकेट बैट्समैन को परेशान कर रही। और इस गेंद पर आदिल मंजूर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन रमीज़ बड़े चालाक है, क्लेवर है, स्मार्ट, एक्टिव क्रिकेटर मैं कहूँगा। बढ़िया शॉट, लेकिन रन बनेंगे सिर्फ 1, प्रोटेक्शन है वहाँ पर। इस 1 और रन के साथ स्कोर 81, 4 विकेटों के नुकसान पर 43 हो गया स्कोर। यहाँ आदिल मंजूर का 28 गेंदों पर 43 रन, 75 रन चाहिए 43 गेंदों से। 75 नीडिंग फ्रॉम 43 बॉल्स। 6.31 करंट रन रेट और 10.47। पहली बार जो है रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो है बहुत ऊपर चली गई है। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन रन सिर्फ 1। और थोड़ा सा फंबल यहाँ पर और देखना होगा, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नहीं, ये बड़ी मिस्टेक यहाँ तिलसरा जिमखाना के फील्डर्स के जानिब से। ऐसा नहीं करना होगा, नहीं करना होगा। और कारपोरा के लिए ये किस्मत, और शॉट में भी ताकत था यहाँ पर। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो शहबाज मंजूर ने ये चौका लगाया यहाँ पर, जिगरा दिखाया यहाँ पर, हिम्मत दिखाई। ऐसा ही करना होगा शहबाज मंजूर को, डटे रहना होगा यहाँ पर। हर ओवर में एक बड़ा शॉट लगाना होगा यहाँ पर, तभी रन रेट जो है 10 से नीचे जाएगी। और मेज़ान कारपोरा एक मौका, बड़ा मौका है यहाँ पर फाइनल जीतने का।
आदिल मंजूर 43, शहबाज मंजूर 7। अच्छा कर रहे हैं शहबाज मंजूर भी। अगर हम देखेंगे 12 गेंदों से 7 रन बनाए हैं। यहाँ पर ठहरना होगा यहाँ पर, क्योंकि आगे के दो बैट्समैन जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हिटर्स हैं और अच्छे क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो जीत सकते हैं मेज़ान कारपोरा। अब और नज़दीक आता हुआ ये मैच 71 रन चाहिए 42 गेंदों से। साजिद चले और बहुत ही बढ़िया शॉट। ओह क्या कैच! इसको मैं कैच ऑफ द मैच यहाँ पर मानूंगा। इसको कहते हैं हम स्पेक्टिकुलर कैच के नाम से पुकारते हैं हम। ये कैच एक ही हाथ से ये कैच यहाँ पर लिया। क्या खूबसूरत कैच, लाजवाब, कमाल का कैच। मुझे लगता है जानटी रोड्स की याद यहाँ पर मुझे आ रही है। साउथ अफ्रीका के जानटी रोड्स की मुझे याद यहाँ पर याद आ रही है। बिल्कुल फ्लाइंग बोर्ड जिसको हम कहते हैं, उड़ते हुए परिंदे की तरफ से जो है फ्लाइंग बोर्ड का इस्तेमाल करते एक ही हाथ से इस कैच को पकड़ा है। और मुझे लगता है कैच ही नहीं, इस मैच को भी यहाँ पर फील्डर ने पकड़ा है। और इसके साथ ही आदिल मंजूर की इनिंग का खात्मा हो गया। ज़ुहैब नज़ीर को यहाँ पर लाया गया है और ज़ुहैब नज़ीर पर भी काफ़ी जिम्मेवारी है। और ज़ुहैब नज़ीर के पास भी टैलेंट है, क्योंकि जो रास्ता यहाँ पर बनाया, जो यहाँ पर एक प्लेटफार्म बनाया इन दोनों ने, आदिल मंजूर ने, इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाना होगा अगर मेज़ान कारपोरा का इस मैच को जीतना है। बट साजिद ने एक इम्पॉर्टेंट मरहले पर एक इम्पॉर्टेंट विकेट यहाँ निकालने में कामयाब हो गए। 71 रन चाहिए 41 गेंदों से, और 5 बैट्समैन जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं। 13.1 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल मैं कहता हूं कि जानटी रोड्स की तरफ से ये बिल्कुल ऐसा छलांग लगाया, एक ऐसे एथलीट की याद हमने अभी दिलाई इस फील्डर ने कि एक हाथ से कैच लपक लिया। कैच ही नहीं, मुझे लगता है कि मैच भी लपक लिया किसी हद तक। मैं कैसा अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि जो बैट्समैन आउट हुआ है वो आदिल मंजूर हुआ है। आपके ज़माने का ग्लेन फ्लिप्स, आपके ज़माने का बेस्ट फील्डर ग्लेन फ्लिप्स। तो शुक्रिया बाबा साहब मुझे याद दिलाने के लिए। आज के ज़माने के मैं कहूँगा ग्लेन फिलिप्स की तरफ से ये जो उन्होंने बिल्कुल फ्लाइंग बर्ड का मुजाहरा कि बहुत ही बढ़िया गेंद दोबारा यहाँ बट साजिद की जानिब से, और डॉट डिलीवरी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी पर डॉट। और ज़ुहैब नज़ीर जो है अच्छे हिटर की तरफ से माने जाते हैं, बैटिंग करना जानते हैं, अच्छे शॉट्स लगाना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जिगरा दिखाना होगा तिलसरा के खिलाफ। चले बहुत एक और खूबसूरत गेंद, लगातार बीट होते हुए बैट्समैन यहाँ पर ज़ुहैब मंजूर। 2 गेंदों पर लगातार दोबारा बीट होते हुए यहाँ पर ज़ुहैब नज़ीर। बट साजिद जानते हैं कि किस स्पॉट पर गेंद डालनी है। साजिद चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को भी बीट हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर बैट्समैन। लगातार 3 गेंदों पर ज़ुहैब नज़ीर बीट हो गए। यहाँ पर लगातार 3 गेंदों पर यहाँ बीट हो गए। और ये क्या गेंदें डाल रहे हैं, बिल्कुल बैट्समैन समझ नहीं पा रहा है इन गेंदों को। कारपोरा की ये इनिंग अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। तो आदिल मंजूर जब क्रीज पर था तो कुछ अलग ही यहाँ पर नज़ारा था, एक जान सी आ गई थी तमाशाइयों में, और एक अलग सा मज़ा यहाँ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके बाद अचानक से जब वो कैच पकड़ा फील्डर ने, तो दोबारा से तिलसरा जिमखाना, और ये शॉट और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये लंबा, ये ऊंचा और बहुत ही बड़ा शॉट, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। गेंद सीधे चले गए तारामंडल में 6 रन के लिए। बट साजिद चले, अंपायर को क्रॉस, और एक बड़ा शॉट, और कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर। लेकिन ऐसा ही करना होगा यहाँ पर ज़ुहैब नज़ीर को,
इसके साथ ही एक ओवर का खात्मा हुआ और स्कोर जो है आप 92 5 विकेटों के नुकसान पर। 14 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जो है 92 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 64 रन चाहिए यहाँ 36 गेंदों पर। अलमीज़ान कारपोरा के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लड़ाई लड़नी होगी यहाँ पर अलमीज़ान कारपोरा को। और तिलसरा जिमखाना बिल्कुल अपने एफर्ट्स के साथ, बेस्ट एफर्ट्स के साथ लड़ते हुए, उनके बॉलर्स यहाँ पर कंप्लीटली लड़ते हैं, वो भी अच्छी तरह से यहाँ फाइट में आ गए हैं। मुकाबला बिल्कुल राडार पर मज़ेदार मुकाबला अब आ गया है यहाँ पर। बट साजिद ने एक नई जान लाई है यहाँ पर मैच में जब इसने आदिल मंजूर को आउट किया। लेकिन अभी हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स से हमारा एक साथी कह रहा है कि शहबाज मंजूर के पास सलाहियत ज़बरदस्त है, ये ज़ुहैब नज़ीर के पास, कि ये बड़े हिट्स लगा सकता है। और एक हिट इसने दिखाई यहाँ पर, जो लंबा और ऊंचा छक्का इसने यहाँ पर लगाया, तो ये इस बात की गवाही देता है कि इस बैट्समैन में सलाहियत है। शाहिद चले, इस गेंद को खेला है, बहुत ही खूबसूरत खेला है, गेंद नो मैन लैंड में गई है और दूसरे रन के लिए बहुत ही टाइट यहाँ पर, और 2 रन बनाने में कामयाब हो गया यहाँ पर बैट्समैन। ऐसा ही करना होगा, क्विकली दौड़ना होगा, 1 को 2 में तब्दील करना होगा, 2 को 3 में तब्दील करना होगा, क्योंकि ये मरहला आपके लिए बहुत ही अहम है। ये मरहला जो मैच का है अलमीज़ान कारपोरा के लिए बहुत ही अहमियत रखता है और बहुत ही खतरनाक ढंग से खेलना चाहता था, लेकिन इस बार भी मिस कर गई गेंद को। और एक डॉट बॉल। शाहिद हुर्रा को मैंने देखा है कि इसकी गेंदें बिल्कुल अच्छी स्पॉट पर वो गेंदें डाल रहा है और अंदर ला रहा है बैट्समैन के लिए गेंदें, और बोल्ड कर दिया, इस बार बोल्ड कर दिया है। मैं भी कह रहा था कि शाहिद हुर्रा बैट्समैन को अंदर गेंद ला रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंद ला रहे हैं। इनकी गेंद बिल्कुल परेशान कर रही थी जो लास्ट ओवर इसने फेंका था, और इस बार एक और विकेट निकालने में कामयाब हो गए शाहिद हुर्रा यहाँ पर। और 6वें विकेट का पतंग यहाँ हुआ अलमीज़ान कारपोरा का। और एक बैट्समैन जिसकी हम तारीफें कर रहे थे वो पवेलियन को लौटता हुआ। मुझे लगता है कि तिलसरा जिमखाना नहीं छोड़ने वाले हैं इस मैच को, नहीं छोड़ने वाले हैं इस मैच को, क्योंकि बासलाहियत बॉलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी बॉलर आ रहे हैं बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं, विकेट विकेट डाल रहे हैं। जो भी सुपनर आ रहा है या फास्ट बॉलर आ रहे हैं, विकेट टू विकेट जो ऑप्शन बहुत अच्छा है यहाँ तुजन में, क्योंकि अगर हम आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद फेंकेंगे तो ज़रूरी तौर पर यहाँ जो शॉर्ट डायमेंशन इस ग्राउंड के चौका हो सकता है। तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ जिमखाना, तिलसरा जिमखाना की जानिब से। और रन रेट अब आसमान को छूती हुई 11.27 हो गई है रिक्वायर रन रेट। 62 रन चाहिए 33 गेंदों से। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं कि मेहरबानी करके ये जो चैनल है यूट्यूब पर जिस पर आप मैच देख रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंच जाएं। और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा भी काम बनेगा। तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैच को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस मैच का एंटरटेनमेंट हासिल कर सकेंगे। शाहिद हुर्रा चौथे गेंद के साथ बहुत ही खूबसूरत, कमाल का ये बॉलर, और आइडिया ये तमाम हटाए। इस बॉलर के पास बड़ी सलाहियत है। देखिए इसका जो मेंटल पावर है बिल्कुल काम कर रहा है, जहन बहुत ही अच्छा जहन है इसका। और इस बार खेला है लेफ्टी ने और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये जो नेक्स्ट बैट्समैन यहाँ पर लाया गया है अलमीज़ान कारपोरा की जानिब से, ये है शरीफ ज़ुबैर। शरीफ ज़ुबैर भी अच्छा जानते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, इनके पास अच्छी सलाहियत है और इस बार खेला है बहुत ही अच्छा अप्रोच।
आते ही इन्होंने चौका लगाया और दूसरी गेंद को यहाँ पर डिफेंसिवली खेला है। अच्छा खेल रहे शरीफ जुबैर के पास भी मौका है कि कुछ करने का। शाहिद चले, इस गेंद को खेला, काट किया और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 3 गेंदों पर 8 रन बनाए। यहाँ पर ऐसा ही करना होगा क्योंकि इस पार्टनरशिप को एटलीस्ट 30-40 रन का कैमियो खेलना होगा। 102 6 विकेटों के नुकसान पर। 102 for 6। बहुत करीब आ गया है ये मैच। अब 54 रन चाहिए 30 गेंदों पर। 54 नीडिंग फ्रॉम 30 बॉल्स। मुझे लग रहा है कि ये जो सफ़र है अब अलमीज़ान कारपोरा के लिए आसान होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी इनके पास 4 विकेटें हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि वक्त ज़ाया ना किया जाए। तो फील्डर्स थोड़ा सा मशवरा करते हुए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मरहला है गेम का, अहम मरहला है गेम का। यहाँ से गेंद किसी जानिब भी जा सकती है। अगर यहाँ पर 2 अच्छे ओवर हो गए, 1-2 विकेट निकालने में कामयाब हो गया तिलसरा जिमखाना, तो यकीनी तौर पर मैच जो है उनकी जानिब जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि लेफ्टी शरीफ जुबैर के जो 2 चौके हैं, थोड़ी सी जान आ गई है अलमीज़ान कारपोरा के लिए। शाहिद हुर्रा को दोबारा से मोर्चे पर लाया जा रहा है। माफ़ कीजिए, इसाक अहमद को यहाँ पर मोर्चे पर लाया जा रहा है। अब इसाक का ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी अहम होगा। इसाक अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए और शहबाज मंजूर के लिए। इसाक ने क्रॉस के अंपायर को इस गेंद को खेलना चाहते थे। बढ़िया गेंद पढ़ नहीं पाए इस गेंद को और बीट हो गए। यहाँ पर शहबाज मंजूर को भी अब गेंदें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 13 गेंदों से उसने 7 रन बनाए हैं। अब कुछ ना कुछ करना होगा, यहाँ पर पलटवार यहाँ पर करना होगा शहबाज मंजूर को। एक बड़ी हिट यहाँ पर दरकार है अलमीज़ान कारपोरा को। देखना होगा क्या हो जाएगा। इसाक चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेला और बहुत ही फाइन खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से पार कर गई 4 रन के लिए। तो माफ कीजिए, यहां से जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि इस गेंद पर 2 रन बन गए हैं, कि ये जो शॉट था बहुत फाइन था कि हमारी नज़र वहां नहीं पहुंची। तो 2 रन यहां पर कपल यहां पर बन गया। इन 2 रनों के साथ स्कोर 104 हो गया अलमीज़ान कारपोरा के 6 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है और दोबारा यहां बीट हो गए बैट्समैन। इसाक अहमद को लाया गया है और तिलसरा जिमखाना बिल्कुल अच्छे बॉलर्स यहां पर ला रहे हैं आखिरी आयाम में। इसाक अहमद की गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं शहबाज मंजूर। और बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन उतना अच्छा यहां पर और कैच ड्रॉप हो गया। एक और कैच यहां पर ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है आज तिलसरा जिमखाना ने बहुत, और रनआउट का चांस भी यहां पर नहीं कुछ कर पाए तिलसरा जिमखाना। किस्मत अलमीज़ान कारपोरा के साथ चमकता हुआ। 2 चांसेस यहां हमने देखे, एक आसान सा कैच शहबाज मंजूर का और साथ साथ में यहाँ रनआउट का भी चांस था। दोनों गंवा दिए, दोनों छोड़ दिए यहाँ पर तिलसरा जिमखाना ने। थोड़े से टेंशन में है क्योंकि फाइनल मैच है, लेकिन बड़ी तगड़ी टीम है तिलसरा जिमखाना अलमीज़ान कारपोरा के मुकाबले में। इसाक 5वीं गेंद के साथ चले और पैड पर लगी इस बार गेंद। 1 रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन स्लिप फील्डर वहां पर तैनात, किसी रन का इजाफा नहीं। और इसाक का ये ओवर बहुत ही अच्छा रहा है। बिल्कुल अच्छे स्पॉट पर जो है इसाक गेंदों को टपा खिला रहे हैं, बैट्समैन को खींच रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं खेलने के लिए। हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं यहाँ मिल रहे हैं शहबाज को। चले, और ये कनेक्शन बढ़िया, लाजवाब कनेक्शन, और गेंद जाएगी सीधे तारामंडल में, दर्शक गीरगाह में 6 रन के लिए।
ये कनेक्शन बढ़िया था, गेंद सीधे इस वक्त मिडल ऑफ द बैट टकराई थी, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट टकराई थी और गेंद सीधे बाहर चली गई दर्शक गीरगाह में 6 रन के लिए। शहबाज मंजूर का ये कनेक्शन लाजवाब था, ये कनेक्शन सीधे जो बैट के दरमियान से गेंद टकराई और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक और बड़ी उम्मीद यहां जागती हुई अलमीजान कारपोरा के लिए। स्कोर और नजदीक आता हुआ, अब 44 चाहिए, 24 गेंदों के ये मैच मजेदार साबित होता हुआ और 11 रन हर ओवर बनाने होंगे यहां पर। अगर 1-2 छक्के यहां और लगाएंगे तो रन रेट और डाउन हो जाएगी और इस मैच में मजा और आ जाएगा। और बाबा साहब को मैं यहां पर कहूंगा कि माशाल्लाह, अगर जब भी मैं आपके साथ कमेंट्री करने आता हूं तो मैच जो है बिल्कुल टाइट होते हैं, आपने देखा होगा सर। सही है। हर बार टाइट मैचेस हमने किए हैं कवर, बागंदर में 3 मैचेस हमने किए हैं, बहुत ही टाइट क्लोज मैचेस कवर किए हैं। इसाक चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेला, गेंद बहुत ऊपर चली गई आसमान में, कैच आउट होने का खतरा और लपक लिया। और यहां पर एक और विकेट दिलाने में कामयाब होगा इसाक अहमद। चले देर से ही सही लेकिन विकेट निकालने में कामयाब हो गया। और कभी ये पलटा एक टीम की तरफ जाता हुआ और इस बार ये मैच सीधे जाता हुआ तिलसरा जिमखाना की जानिब से। और बट साजिद ने दोबारा यहां पर उम्मीदें जगाई अपनी टीम के लिए। और यहां पर हमारा एक तमाशाई इतना खुश हुआ कि खतरा था यहां पर इसको जख्मी होने का, खुशी से फूले ने समाया और बेचारा जख्मी हो गया। और अब इरशाद जो है नया बैट्समैन बट साजिद ने एक इंपॉर्टेंट मरहले पर, अहम मौके पर विकेट दिलाया अपनी टीम को। अगर हम बट साजिद की बॉलिंग पर नजर डालेंगे तो 2.1 ओवर में 9 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बट साजिद अपनी टीम के लिए क्या कर सकता है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। 2.1 ओवर में 9 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस बट साजिद की जानिब से तिलसरा के लिए। मैच एक अहम मरहले पर, एक अहम राडार पर यहां मैच पहुंच चुका है। बिल्कुल आप मानो यहां पर 55 चांसेस है, 2-3 छक्के मैच को अलमीजान की तरफ ले सकते हैं और एक और विकेट यहां पर तिलसरा जिमखाना की जानिब से ले सकता है मैच को। और खेला है लेकिन जान शॉट में नहीं है और सिर्फ 1 रन का इजाफा यहां पर। 112 7 विकेटों के नुकसान पर 113 हो गया यहां पर स्कोर। इस सिंगल के साथ 16.2 ओवर का खेल इख्तिताम हुआ। 113 113 for 7। अगर हम मवाजना करेंगे बॉलिंग, जितने भी बॉलर्स अभी मैंने देखे रन्स उतने उन्हें नहीं दिए। ये किस्मत ही था अलमीजान कारपोरा के लिए कि आदिल मंजूर थोड़े चमके थे, अदरवाइज बॉलिंग में कोई खराबी नहीं लग रही है यहाँ पर तिलसरा जिमखाना के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंदिंग फेंक रहे, कमाल की बॉलिंग तिलसरा की जानिब से। और दोबारा से बीट, सवाल पूछा जा रहा अंपायर को और आउट हो गया यहाँ पर एक और बैट्समैन। 8वें विकेट का पतंग हो गया अलमीजान कारपोरा के लिए। बट साजिद ने एक और विकेट यहां पर दिलाया अलमीजान कारपोरा को, माफ कीजिए तिलसरा जिमखाना को, और 8वां विकेट पवेलियन को लौटता हुआ अलमीजान कारपोरा के लिए। 43 चाहिए 21 गेंदों से। अब ये मैच मुश्किल से मुश्किल जाता हुआ
क्योंकि 12.29 के औसत से रन बनाने हैं यहाँ पर। बहुत ही मुश्किल सफ़र अब लग रहा है मेज़ान कारपोरा के लिए। और तिलसरा जिमखाना, वैसे अगर हम मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तिलसरा जिमखाना की जो टीम है बिल्कुल अपर हैंडेड है, बिल्कुल मजबूत टीम है मेज़ान कारपोरा के मुकाबले में। लेकिन आज मौका था यहाँ पर पलटवार करने के लिए। तो अभी भी 2 खिलाड़ी है, अगर कुछ करेंगे, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि रन रेट 12.29 हो गई है। तो हर ओवर में 2 छक्के लगाने होंगे। बट साजिद अच्छी बॉलिंग के साथ चले, ओ बहुत ही अच्छी बॉलिंग। देखिए, अगर हम देखेंगे कि ये जो बॉलर्स है तिलसरा जिमखाना के, एक तो ये रन्स भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल डॉट बॉल फेंक रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। इससे बेहतर ये क्या कर सकते हैं। बट साजिद 10 रन दिए, 3 विकेटों हासिल करने में कामयाब हुए और 2.4 ओवर के कोटा में 10 रन 3 विकेटें 2.4 ओवर्स में। चले, बहुत ही अच्छा कनेक्शन। देखना होगा कि गेंद कहां जाएगी। गेंद सीधे गई है दर्शक गिरगाह में 6 रन के लिए। साकिब ने यहां पर जिगरा दिखाया, माफ कीजिए, जाकिर ने यहां पर जिगरा दिखाया और गेंद को पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ऐसे बड़े शॉट हर ओवर में कम से कम 2 छक्के चाहिए यहां मेज़ान कारपोरा को इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, बैट और बॉल के दरमियान कनेक्शन चाहिए। बट साजिद आखिरी गेंद के साथ 11.68 जो रिक्वायर्ड रन रेट, नीचे आप आ गई हैं 12 से इस छक्के से। बट साजिद चले, बहुत ही बढ़िया शॉट, ये बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट और गेंद सीधे 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इसको कहते हैं प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। ये शॉट जो है बिल्कुल एक टेक्निक के साथ खेला है बैट्समैन की, क्योंकि गेंद, ये जो स्ट्रेट शॉट्स होते हैं ये बिल्कुल सेफ होते हैं और ये जो शॉट खेला है बिल्कुल तारीफ वाला शॉट है। क्रेडिट यहां पर बैट्समैन को देना होगा, जाकिर को लाजवाब तरीके से खेला और गेंद को पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ताकत नहीं लगाई, सिर्फ टाइमिंग का इस्तेमाल किया और बैट्समैन की पेस का इस्तेमाल किया और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अब इस मैच में और मजा आता हुआ और रन रेट अब चली गई है 10.33 रिक्वायर्ड रन रेट। अब 31 चाहिए 18 गेंदों से। मुझे लगता है इस मैच में और एंटरटेनमेंट आ गया, यहाँ पर तमाशाइयों को बड़ा मजा आ रहा है। 18 गेंदों से और इस गेंद को भी खेला है खूबसूरत अंदाज में, लेकिन यहाँ पर 1 रन बनेगी। अब रन चाहिए यहाँ पर 30 रन के चाहिए 17 गेंदों से। इसका मतलब है कि कर सकते हैं कुछ, लेकिन जिगरा दिखाना होगा मेज़ान को यहाँ पर। इशफाक चले, और बहुत ही बढ़िया गेंद, ब्लैक होल में ये गेंद थी। किसी तरीके से बैट्समैन ने बैट से हटाया इस गेंद को मिडिल स्टंप से। 1 रन यहाँ पर। इसाक बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत खतरनाक अंदाज से गेंद मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी और बैट्समैन किसी तरीके से भी इस गेंद को निकालने में कामयाब हो गए 1 रन के लिए। 2 गेंदों से 2 रन, 1 छक्का चाहिए, 1 चौका चाहिए मेज़ान को। इसाक चले, इस गेंद को खेला है और बहुत ही खूबसूरत खेला है, लेकिन इतनी अच्छी खूबसूरत फील्डिंग। एक पहली गेंद पर 1, दूसरी पर 1, तीसरी का 1 चौका या छक्का जरूरत है मेज़ान को। यहाँ पर चाहिए एक बड़ा छक्का। हो जाएगा या नहीं हुआ इस बार भी, किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदों से 3 रन। अब 2 गेंदों से कम 1 चौका 1 छक्का चाहिए मेज़ान को। क्या करेंगे यहाँ पर जाकिर? कुछ ना कुछ करना होगा, गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाना होगा। जरूरत है यहाँ मेज़ान को। कश्मकश, ड्रामा, और इस गेंद को किसी तरीके से बचाना चाहते थे। आउट होने का खतरा,
दबाव डाला जा रहा है यहाँ पर अंपायर का, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। अंपायर बिल्कुल हटे अपनी जानिब से नहीं, बहुत ही अच्छी सेंसेशनल अंपायरिंग का मुजाहरा करता हुआ यहाँ पर अच्छी सोच दिखाई। यहाँ पर अंपायर ने दबाव लगाया जा रहा था अंपायर पर, लेकिन तिलसरा जिमखाना की ये पूरी टीम सेटिस्फाई थी कि ये विकेट भी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो अंपायर के डिसीजन मानने पड़ते हैं, फाइनल होते हैं, लेकिन इसाक की तारीफ है। प्रेशर सिचुएशन में इसाक ने यहाँ पर प्रेशर दिखाया। जाकिर, एक छक्का चाहिए जाकिर को इस गेंद पर। चले, और बहुत ही बढ़िया शॉट, देखना होगा, नहीं, 1 रन का इजाफा। इसका मतलब स्ट्राइक दोबारा जाकिर के पास आ जाएगी। अब ये जो 2 ओवर्स यहाँ पर रह गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ से 12 गेंदों से अब 29 रन चाहिए हैं इस मैच को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन तारीफें मैं ज़्यादा करूँगा तिलसरा जिमखाना की, क्योंकि जो अप्रोच उन्होंने अपनाया, कैचेस उन्होंने लगातार ड्रॉप किए, लेकिन एक मसला है कि बॉलिंग बहुत टाइट की। स्पॉट जहां पर वो गेंदें फेंक रहे हैं वो बढ़िया है, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। कैचेस उन्होंने बहुत ड्रॉप किए, लेकिन बॉलिंग बहुत बढ़िया की है। इसाक का ये ओवर भी बहुत खूबसूरत साबित होता हुआ। 4 ओवर के कोटा में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए इसाक। अब इरशाद अहमद गनाई जो शायद रिटायर्ड हर्ट हुए थे, दोबारा से यहाँ मैं देख रहा हूँ उनको। 16 रन बनाए 17 गेंदों से, तो लेकिन जाकिर पर बहुत यहाँ पर डिपेंड करता है ये मेज़ान कारपोरा की टीम। जाकिर को कुछ करना होगा, हीरो बनना होगा यहाँ पर। अगर जाकिर यहाँ पर चले तो यकीनी तौर पर पहली बार तुजन के मैदान में कारपोरा लिफ्ट करेगी ट्रॉफी, लेकिन आसान नहीं होगा तिलसरा के खिलाफ। लेकिन T20 फॉर्मेट में कुछ भी मुमकिन है। अभी 12 गेंदें रह गई हैं और रन चाहिए 27, कुछ भी मुमकिन है। अब ये टसल है शबीर और इरशाद अहमद गनाई के दरमियान। शायद जाकिर ने आखिरी गेंद पर रन ली थी, अब जाकिर के पास ही स्ट्राइक रहेगी, तो जाकिर अब कुछ करने वाले हैं। जिगरा दिखाना होगा, एक बड़ा दिल दिखाना होगा, तमाशाइयों को खुश करना होगा। कारपोरा के से काफ़ी तमाशाई आई हैं, कारपोरा चक से हमारे हमीद साहब जो प्रोफेसर है वो भी आए हैं इस मैच को देखने के लिए, तो कुछ करना होगा यहाँ पर अलमीज़ान के लिए। जाकिर को शबीर यूसुफ बहुत खतरनाक बॉलर है, और इस गेंद को खेला और सीधे 4 रन के लिए बॉडी लाइन से बाहर रन आने चाहिए। किस तरह से आएंगे, क्योंकि गन स्पेस से इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं शाहिद शबीर। जहां से आए वहां से आए, लेग से आए, हाथ से आ जाए, पीछे से आ जाए, आगे से आ जाए, रन आने चाहिए। रन दरकार है यहाँ पर अलमीज़ान कारपोरा को। तो हमारी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल बाबा निसार सेंसेशन, प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर, प्लीज, इट इज आवर हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर। शबीर यूसुफ गेंद करेंगे यहाँ पर बैट्समैन को, और इस गेंद को भी बल्लाना चलाना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई और बैट और बल्ले के दरमियान, और एक गेंद जाया होती हुई अलमीज़ान के लिए। कुछ ना कुछ करना होगा, सोच से बैट को, बिल्कुल सोच के साथ बैट को कनेक्ट करना होगा बॉल के साथ। यहाँ पर जाकिर को चले, ओ ये भी डॉट डिलीवरी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है अलमीज़ान को यहाँ पर, और तिलसरा बिल्कुल अपने मकसद में कामयाब होता हुआ। शबीर यूसुफ बिल्कुल अपने मकसद में कामयाब होता हुआ, 2 डॉट डिलीवरीज। जाकिर को कुछ ना कुछ करना होगा, ये 3 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाकिर के लिए। शबीर यूसुफ चले,
अब एक और गेंद मिस हो गई। मुझे लगता है कि गेंद जो मैच जो है अलमीजान से छूटा जा रहा है, स्नैच हो रहा है। 8 गेंदों से 23 रन बनाए होंगे। मैच मुश्किल होता जा रहा है। एक बड़े हिट की दरकार है यहाँ पर अलमीजान को। एक छक्का चाहिए। तमाशाई बेताब है छक्के के लिए अलमीजान के शबीर यूसुफ। चले, अंपायर को क्रॉस किया। इस गेंद को भी खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जाकिर। मौका है जाकिर के लिए, किसी न किसी तरीके से गेंद जो है बल्ले के साथ टकरानी चाहिए। लेकिन शबीर यूसुफ कहां छोड़ने वाले हैं। इनकी गेंदें बिल्कुल गोली की रफ्तार से गेंदें आ रही हैं और बिल्कुल अच्छे स्पॉट पर गेंद को टप्पा खेल रहे हैं। आखिरी गेंद और बहुत ही लाजवाब कनेक्शन, कैच आउट होने का खतरा और आउट। इसके साथ एक और उम्मीद अलमीजान कारपोरा के लिए खत्म हुई। 9वें विकेट का पतंग हुआ और मैच जो है बिल्कुल अब मुश्किल से मुश्किल जाता हुआ अलमीजान कारपोरा के लिए। मुझे लगता है वक्त बचा है इस मैच में, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट था जाकिर का वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और तिलसरा वाले बिल्कुल रेडी है यहाँ पर मैदान में आने के लिए। तिलसरा से जितने भी तमाशाई हैं अभी वो वेट कर रहे हैं कि कब ये ओवर खत्म होगा और वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे यहाँ तुजन ग्राउंड में। आखिरी ओवर अब रह गया है। अब 6 गेंदों से 23 रन बनाने बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहे हैं। अपहिल टास्क अब लग रहा है यहाँ अलमीजान के लिए। देखिए ये जो आखिरी ओवर्स हैं इन पर सोचना चाहिए था बैट्समैन को, जाकिर को, कि कम से कम गेंद बॉल के साथ कनेक्ट हो जाए तो तब जाके अगर कम से कम 5-6 रन और बनाते होते तो 20 रन या 18 रन बनाने होते तो मैच कुछ ना कुछ हो सकता। अब मुश्किल लग रहा है। बट साजिद आखिरी ओवर में चले, अंपायर को इस गेंद को कनेक्ट किया और खूबसूरत कनेक्ट किया और गेंद सीधे 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ऐसा ही करना होगा। ये चौका इस बार इरशाद अहमद गनाई के बैट से जाता हुआ। अब रन चाहिए 19। अब 19 रन चाहिए 5 गेंदों से। कुछ भी हो सकता है। अगर 3 बड़े कनेक्शन यहां पर हो गए तो इसका मतलब है कि अलमीजान को अगर पहली ट्रॉफी यहां लिफ्ट करनी होगी तो 3 छक्के या 2 छक्के जरूरी लगाने होंगे। अब किसी भी गेंद को बैट बॉल को बाहर पहुंचाना होगा। बट साजिद 5 गेंदें रह गई हैं। 19 रन चाहिए अलमीजान को इस ट्रॉफी को लिफ्ट करने के लिए। बॉलर चले हो थोड़ी सी प्रॉब्लम रनअप के साथ। दोबारा से अब बट साजिद बॉलिंग करेंगे यहाँ पर इरशाद गनाई को। चले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक और गेंद जाया कर दिए यहाँ पर बैट्समैन ने और किसी रन का अब और मुश्किल होता जा रहा है यहाँ अलमीजान के लिए इस मैच को जीतने के लिए, इस फाइनल को जीतने के लिए। बट साजिद तीसरी गेंद के साथ चले, अंपायर को बाहर निकल आया। इस बार खेला और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। अब 3 गेंदों से 13 रन के कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन हो भी सकता है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि रॉयल प्रीमियर लीग पुलवामा में
जो बैट्समैन था शायद उसका भी नाम था आदिल मंजूरी बाबा साहब, जिसने आसिफ मुजफ्फर ने 28 रन बनाए थे। नहीं, वो समर अमीन था। समर अमीन ने बनाए थे 28 रन, शायद 23 रन बनाए थे आखिरी ओवर में। तो कुछ भी मुमकिन है, यहाँ पर भी रबीश चाहिए थे। अब मैच और आगे नज़दीक आता हुआ, अब 13 रन चाहिए। हो सकता है इरशाद अहमद का दिल आज मत टूटा होगा, तो 26 रन पर पहुंच गए इरशाद। 2 बड़े हिट्स चाहिए यहाँ इरशाद को, एक छक्का और एक चौका। छक्के और चौके से मैच में और एंटरटेनमेंट और जान आ जाती है। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि तमाम तमाशाइयों से कि मैच के इस इम्पॉर्टेंट मरहले में हमारी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एंटरटेनिंग मैच पहुंच जाए। बट साजिद चौथी गेंद के साथ बहुत ही अच्छी गेंद, बट साजिद अंपायर को क्रॉस किया, इस गेंद को खेला है, लेकिन ये डॉट डिलीवरी यहाँ पर बहुत मुश्किल, अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि 13 चाहिए 2 गेंदों से। 12 ही बन सकते हैं 2 गेंदों से, अब 13 चाहिए। अब मानो सिर्फ गेंदे बचे हैं, बाकी कुछ नहीं। तिलसरा ये मैच ऑलमोस्ट जीत चुका है। एक रन का इजाफा यहाँ पर, और इसके साथ ही तिलसरा जिमखाना ने तुजन के मैदान में यहाँ पर मैच को जीता है, बड़ी मेहनत के साथ जीता है। हमारे कैमरा के सामने आप देख लीजिए, तिलसरा जिमखाना के तमाशाई बिल्कुल खुश होते हुए, फूले न समाये होते हुए, आसमान में इनकी खुशियाँ जाती, और यहाँ पर उन्होंने इस फाइनल मैच को जीता है। तो यहाँ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ तिलसरा जिमखाना की टीम को। कशमकश के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर मैच को जीता, मेहनत के बाद इन्होंने के मैच को यहाँ जीता है। तो दोबारा से हम यहाँ पर मुबारकबाद देना चाहते हैं तिलसरा जिमखाना की टीम को कि उन्होंने यहाँ तुजन के मैदान में एक और फाइनल जीतने में वो कामयाब हो गए।